गाइस हम लोग बस 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तो ये मीट ऐसे होने वाला है कि अभिनव सर पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। और तुम लोगों को जो भी डाउट्स आएंगे तो चाहे हैंड रेस कर देना, और फिर हैंड रेस करने के बाद अगर हम माइक ऑन करने बोले तो माइक ऑन कर लेना, या फिर चैट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना, ठीक है। और कुछ भी अगर आंसर करने को बोला जाए तो उसको एक्नॉलेज करते रहना और चैट पे आंसर करते रहना। हेलो। आई गेस सब ज्वाइन हो गए होंगे, सो आई थिंक सेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, स्क्रीन आ रहा है तुम लोगों को? बता दें। आई पेस्टेड अ डॉक लिंक इन द चैट। उस डॉक को ओपन कर लेना, जो भी अभी मैं बताऊंगा तो उसमें कुछ चीजें पेस्ट कर लेना। ओके, तो आई गेस तुम लोगों ने अभी तक लाइक सीपी तो स्टार्ट कर दिया है।
लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा लाइक व्हाट वी डू बेसिकली, बेसिक क्वेश्चंस एंड ऑल। तुम एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट भी डाला गया था, आई गेस तुम लोगों ने सॉल्व किया है बहुत लोगों ने, सो आई होप तुम्हें एक बेसिक आइडिया होगा Yeah. अभी सीपी का। एंड सो आज हम लोग लाइक नंबर थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली नंबर थ्योरी में तुम लोगों ने लाइक 11 12 में जेई एंड ऑल में मैथ्स बहुत पढ़ा है, तो सम पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ही है इसमें, लाइक यू कैन से जो जिसका हमें सीपी में काम आता है। सो थोड़ा लाइक तुम लोग को ऐसा मतलब मत रखना कि माइक ऑन करने में कोई इशू है, जब भी मन करे ऑन करके तो इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी डाउट्स है नॉल हो तो पूछ सकते हो। एंड लाइक मैं जो भी कुछ पूछूं तो ट्राई करो आंसर करने का, या तो माइक ऑन करके या चैट में, ठीक है? तो सेशन इंटरेक्टिव रखोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। ओके, हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, हाँ सो तुम लोग लाइक ये बताओ तुम्हें व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉड्यूलो ऑपरेटर? ओके, लेट्स लीव दिस फॉर नाउ। तुम्हें, you guys have seen this operator, this modulo operator. What's the functionality of this? Gives the remainder. Okay, remainder we get after dividing either way. Okay, so I hope you guys know कि ये operator क्या करता है. If we have two numbers, we write a modulo b. It gives, when we divide a by b, whatever remainder we get. Okay, so if a is let's say 5, b is 3, so what would be 5 modulo 3? So when we divide 5 by 3, we get 1 as the quotient and 2 as the remainder.
So this would give us 2. So ये basic I guess सबको पता होगा. What does modulo operator do? But हमें we have to look at this modulo operator in a bit कि what are actual use cases of this operator. It's not just like कि ठीक है रिमाइंडर देता है, but you have to understand it a little, मतलब होता क्या है एक्चुअली इससे. तो अगर मैं किसी भी देखूं लाइक 12 मॉड्यूलो 3 करूं, तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज अगर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर इज गिविंग मी आंसर 0, ओके, इफ a modulo b is giving me 0, that means does that mean anything? Okay, what do you mean if a modulo b is 0? Can you say anything about a and b? Sir, A is a multiple of B. Yeah, a is a multiple of b. So if remainder on when a is divided by b, if the remainder is 0, that just means ki a is a multiple of b, or we can say that b is a divisor of a or a factor of a. Okay, divisor or factor, whatever you wish to say. ठीक है, तो दिस वाज वन थिंग, वन प्रॉपर्टी. एंड उसके अलावा लाइक अगर तुम इसे फील करो व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं कुछ नंबर्स का लेट्स से देयर इज सम नंबर एनीथिंग 13, मैं मॉड्यूलो 4 ले रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स गिविंग मी 1. अब इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं लेट्स से सारे नंबर्स का मॉड 4 करते जाऊं, सो 0 mod 4 वुड बी 0, then 1 mod 4 would be 1, then 2 mod 4 would be 2, 3 mod 4 would be 3, 4 mod 4 again we would get back to 0, 5 mod 4 we would get 1, 6 mod 4 we would get 2. So if you see what is happening, 0 1 2 3, then again 0 1 2 3, and this cycle keeps on repeating. So doing mod 4, like we have to now abhi in modular arithmetic we have to look at numbers in the basically in mod m form. So हो क्या रहा है numbers का, like in normal terms we have numbers from minus infinity to plus infinity, but अगर उसे मैं mod 4 के basically किसी भी mod m के relation में देखूंगा किसी भी number को, then that number the range of numbers get reduced from minus infinity to plus infinity it was before, but अगर मैं mod 4 करते जाऊं सबको, the range get reduced from 0 to m minus 1. Okay, so if I'm doing mod m, the range of values that I get is 0 to m minus 1. तो 0 to m minus 1 वाले नंबर्स को mod m करने में would remain the same. बाकी कोई भी नंबर को mod m करते हैं, then it would just change like this. So 0 1 2 3, after that again you get 0 1 2 3 0 1 2 3. Now what happens to the negative numbers? एक बार उसे भी अगर तुम एनालाइज करना चाहो, what should be minus 1 modulo 4? So according to the same pattern, minus 1 modulo 4 before 0 should come 3. Okay, so what should be minus 2 modulo 4? It should be 2. Minus 3 modulo 4, it should be 1. Minus 4 modulo 4 should be 0. Okay, अब लाइक पॉजिटिव नंबर्स का तो रिमाइंडर वुड बी क्लियर टू यू कि किस तरह से निकलता है. कुछ भी 6 मॉड्यूलो 4 कर रहे हो, देन ओके तुम डिवाइड करोगे, वट एवर रिमाइंडर यू गेट, दैट्स व्हाट 6 modulo 4 is. But if you look at negative numbers, minus 1 modulo 4 is not, अगर तुम 1 को 4 से डिवाइड करो then the remainder you get would be 1, but minus 1 modulo 4 is actually 3. तो ये why is it 3 and why is it not 1? First of all, one way to understand this is if you look at this cyclic form.
If you look at this pattern 0 1 2 3 0 1 2 3, if we maintain the pattern, then here we should have 3 2 1 0. अगर मैं यहाँ 0 के बाद 1 2 3 कर दूं तो ये पैटर्न एक्चुअली ब्रेक हो जा रहा है, या रिवर्स ऑर्डर में पीछे चला जा रहा है. सो एक्चुअली फॉर नेगेटिव नंबर्स -1 is 3. Another way to understand this would be कि what actually is like, if any in mod m, let's say I'm writing 3, which all numbers would have modulo 4 equal to 3? 3 would have modulo 4 equal to 3, then 7 would have modulo 4 equal to 3, and then we would have 11 modulo 4 equal to 3, 15 modulo 4 equal to 3. If you look at these numbers 11 15 7 3, so क्या हो रहा है बेसिकली 3 में अगर हम +4 +4 +4 करते जाए, all these numbers would have modulo 4 equal to 3. So basically all the numbers जिनका mod in terms of mod m that is equal to some x, all those numbers would be separated by a distance of m. Okay, so 3 7 11, same way backward जाने में 3 से पहले 3 - 4 would be -1. So -1 should be the number that is separated by a distance of n. ठीक है, तो ये एक दो चीजों से तुम्हें एक लाइक फील मिल गया होगा व्हाट इज एक्चुअली द मॉड्यूलो फॉर नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो whenever you do whenever you wish to do any negative number modem, uh, it is like this. So if you want to generate some formula for this, like अब in general मुझे ऐसे कुछ अगर दे दिया जाए -6 mod 4 और let's say -8 mod 5, ऐसा कुछ मुझे दे दिया जाए, then how do I calculate it? First of all, I'll have to convert it to positive, and positive में convert -8 को डायरेक्ट +8 करके नहीं होगा. You would have to add some multiple of this 5. So -8 में if I add some multiple of 5 so that it becomes positive, and it comes just in the range of 0 to m-1 4. तो -8 में अगर 5 ऐड करें then it becomes -3, still it's not in the range. Again 5 add kare, then it becomes 2, which is in the range. So -8 mod 5 would be 2 actually. So actually the formula is for any negative number, तो -8 को as a positive 8 लेके तो mod कर दो, where you get 3, and then you have to do m minus that. Okay, so m minus 3 यानी कि 5 minus 3 you get 5 minus 3 would get 2. ओके, सो आई गेस तुम्हें एक फील मिल गया होगा नेगेटिव नंबर्स का मॉड्यूलो क्या होता है एंड ऑल. ओके, सो नाउ वी कैन लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो. सो ये एक फील लेने के बाद आई गेस तुम्हें वो प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएंगी व्हाई दोज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज sum of any two numbers if you are calculating a plus b mod m, that is a mod m plus b mod m whole mod m. Okay, so why is it that? क्योंकि हम कोई भी दो नंबर्स को mod m कर रहे हैं, then if I am writing like this, a को मैं already mod m कर दूं, that means a was maybe some big number greater than m. mod m करने के बाद it just get reduced to the range of 0 to m-1, and same way b भी some greater number होगा, it gets reduced to the range of 0 to m-1, and ये reduction would be, so getting reduced from a to a mod m means you are adding or subtracting some multiple of m only. Same way from b to b mod m, you are adding or subtracting some multiples of m. So after adding or subtracting some multiples of m, if for this sum finally whatever you get, in that if you do mod m, then in that also you are adding or subtracting some multiples of m, and finally whatever number you get, that would be something in the range of 0 to m, and overall what you did, a plus b जो भी था उसमें से कुछ मल्टीपल्स ऑफ m ही मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो वही एक्चुअल मीनिंग ऑफ
ए प्लस बी मॉडर्म होता है कि तुम कुछ मल्टीपल्स ऑफ एम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो सो दैट यू गेट इनटू द रेंज ऑफ 0 to m-1. सो आई गेस ये क्वाइट क्लियर होगा व्हाई दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, एंड एक इंट्यूटिव तुम्हें प्रूफ भी मिल गया होगा अबाउट दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो ये आई गेस क्लियर होगा. सेम वे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का भी देखूं तो मल्टीप्लीकेशन में भी अगर मैं a इंटू बी करके मुझे मॉडर्म करना है, सो आई कैन इंडिविजुअली डू a मॉडर्म पहले कर लूँ, b मॉडर्म पहले कर लूँ, एंड देन उनका प्रोडक्ट जो आएगा उसे मॉडर्म कर लूँ. सो ये भी आई गेस क्वाइट क्लियर है बिकॉज मुझे a और b मल्टीप्लाई करना है. तो a modem is a reduced by some multiples of m, b modem is b reduced by some multiples of m. Their product would be a अगर जो भी मल्टीपल m से रिड्यूस हुआ है, b जो भी मल्टीपल ऑफ m से रिड्यूस हुआ है, सो इफेक्टिवली उनका प्रोडक्ट ही आएगा. सो ये ओवरऑल नंबर भी सम मल्टीपल्स ऑफ m से ही रिड्यूस हुआ है. तो लाइक एक इंट्यूटिवली तुम्हें प्रूफ मिल गया होगा. बाकी तुम्हें एग्जैक्ट प्रूफ करना है ये मल्टीप्लिकेशन का तो तुम एक बार कॉपी में लिख के ट्राई कर सकते हो, तुम एग्जैक्ट प्रूफ भी कर पाओगे. बट अभी उस पे नहीं जाते. आई थिंक इंट्यूटिव प्रूफ वुड बी इनफ फॉर यू. तो ये दोनों आई गेस क्लियर है. देन व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन. अभी मैंने बताया था व्हाट इज माइनस बी, एनी नेगेटिव नंबर. हियर आई एम अज्यूमिंग दैट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर a माइनस बी हम करते हैं देन दिस माइनस बी इज सम नेगेटिव इंटीजर. तो व्हाट वी कैन डू इज, अभी मैंने बताया था अगर मुझे -8 का करना था mod 5, सो आई कैन डू 8 mod 5 एंड उसे 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूं. सो दिस वे आई वुड गेट -8 mod 5. तो वही मैं कर रहा हूँ. माइनस बी कैन बी रिटन एज m माइनस बी मॉडम. दिस होल इज द, so a minus b is actually changed to a minus b modem is actually changed to a plus minus b इसका modem. So this minus b modem is actually m minus b modem. Okay, so I have written a modem plus m minus b modem, this whole modem. Okay, I hope how we converted ये clear है. तो यही लिखा हुआ है. तो मेन थिंग तुम्हें ये ध्यान में रखना है बिकॉज इन जनरल इस मॉडर्म का यूज क्या आएगा इन मेनी प्रॉब्लम्स में भी तुम्हें शायद ऑब्जर्व हुआ हो. समटाइम्स तुम्हें दिया जाता है कि फाइनल जो तुम्हें आंसर है यू हैव टू प्रिंट इट इन मॉड्यूलो 1e9+7 समथिंग लाइक दैट. कोई एक दो प्राइम नंबर तुम्हें दिया जाता है एंड योर एक्चुअल आंसर का रेंज कैन बी वेरी ह्यूज. बट तुम्हें बोला जाता है इन द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू प्रिंट द आंसर इन सम मॉड m. तो वैसा करने के लिए लाइक विल कम टू इट, बट मेन इन प्रॉपर्टीज का उसमें यूज आता है बिकॉज तुम अगर इन द मिडिल कहीं भी एडिशन कर रहे हो देन यू कैन उस टाइम ही मॉडर्म मॉडर्म हर जगह कर सकते हो. इट वुड नॉट अफेक्ट योर फाइनल आंसर. सेम वे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तो बीच में बिफोर मल्टीप्लाइंग यू कैन डू मॉडर्म, इट वुड नॉट अफेक्ट योर फाइनल आंसर. बस सब्ट्रैक्शन में तुम्हें ध्यान रखना है जब भी तुम a माइनस बी मॉडर्म को डायरेक्ट a मॉडर्म माइनस बी मॉडर्म मत लिख देना. एक प्लस m का टर्म एक्स्ट्रा आता है. ओके, सो वेन एवर यू गेट सम सब्ट्रैक्शन का टर्म ये प्लस m ऐड करना जरूर ध्यान रखना. दैट्स द मेन थिंग अबाउट इट. ओके, आई गेस ये तीनों थिंग वुड बी क्लियर टू यू. Then there are two more properties. We are not going to the proof of that currently, but at the end I would provide you some links जहाँ से तुम जाके exact proof इसका जान सकते हो. But for now I'm like proof is not needed to know. तो इसलिए just to save time मैं proof नहीं बता रहा हूँ इन दो properties का. But if you want to know exact proofs, यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट. मैं डॉक में ही उसका लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तुम जहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो वन थिंग इज अबाउट डिवीजन. इफ यू हैव टू डू p डिवाइडेड बाय q, फर्स्ट थिंग टू नोटिस दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू p मॉड्यूलो m डिवाइडेड बाय q मॉड्यूलो m. तुम मे बी ट्राई कर सकते हो. दिस these both things are not equal. मल्टीप्लीकेशन में यू कैन डू, बट डिवीजन में तुम डायरेक्टली p को मॉडम एंड q को मॉडम करके डिवाइड नहीं कर सकते हो. दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, ये ध्यान में रखना है. तो व्हाट डू यू डू इफ यू हैव टू डू p by q मॉड्यूलो m.
what you can do is this. So this is basically whenever you have to divide by q, तुम्हें q का इनवर्स लेना पड़ता है, एक इनवर्स इक्विवेलेंट लेना पड़ता है which is equivalent to 1 by q. Okay, so we would see what that inverse is. So you can write basically p by q as p multiplied by inverse of q mod m. Okay, and that inverse is actually q to the power m minus 2 if m is a prime number. Okay, if m is not a prime number, then you would have a little different term. वो अभी required नहीं है. I'll provide links जहाँ से तुम पढ़ सकते हो if you need to know more. But for now, just remember this. In most cases, your m would be a prime number. So for a prime number, inverse of q is calculated at q raised to the power m minus 2, this modulo m. Okay, so अगर जहाँ भी तुम्हें p divided by q करना हो, you can do like this: q multiplied by p multiplied by the inverse of q, where inverse of q is this. Okay, so I hope ये property तुम्हें समझ में आ गया होगा. And then for exponentiation, अगर तुम्हें a to the power x का modulo m करना है, and where x is very large number, तो effectively you can do x modulo m minus 1. यहाँ पे mod m नहीं आएगा. For the base you can do a mod m. Okay, base के लिए you can do a mod m. But जो power होगा, for the power you would have to do x modulo m minus 1, and for this property also m should be a prime number. Okay, so ये दो property बस I'm not telling you the proof, बस ध्यान में रखना. Okay, काम आ जाता है in problems. So I hope these properties are clear to you. If there is any doubts, पूछ लेना जरूर. If you don't have any doubt, then react, or if you have any doubt, then you can raise your hand. एक बार रिएक्ट कर दो. जिन्हें कोई डाउट्स नहीं है चैट में एक बार यस लिख दो या 1 लिख दो. Yeah, I'll attach the proof sources in the doc. Don't worry about it. ठीक है, आई गेस सबको क्लियर हो गया यहाँ तक. Okay, so अब मैं I'm giving you a short problem. Just try to find its solution. Okay, पहले तो बताओ क्या प्रॉब्लम क्लियर है, व्हाट यू नीड टू डू. एंड तुम्हें जस्ट एज अ इनपुट दो चीजें दिया गया, n और m, टू वेरिएबल्स. यू हैव टू आउटपुट n factorial modulo m. Okay, so whatever is the factorial of n in terms of mod m that you have to output. Okay, and this n can vary up till 10 to the power 5. So normally अगर तुम n factorial find करो,
you can find it in order of n, no problem. But let's say तुम 10 to the power 4 का फैक्टोरियल लिख रहे हो, that वो वैल्यू कितना बड़ा जाएगा, that would exceed long range or any range. Okay, so you have to find some way so that you can compute this thing, this answer in through your code. जिससे कुछ आ जाए लॉजिक की, what we can do, you can write in the chat or even say to the mic. Okay, like क्या प्रॉब्लम समझ में आया सबको, what we need to do? Okay. किसी ने लिखा we can use this property of a into b mod m is equal to this product property, but we can create an array and store numbers with mod m 3. Okay, I think most of the लोग you are right, जो तुम बोल रहे हो. Okay, so basically what we can do is, अगर let's say मुझे n equal to 6 दिया है, और let's say m equal to 15 दिया है, so one way is just multiply 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so या तो तुम from 1 to n all numbers को multiply कर लो, but you know like 6 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, this would be 720 I think. But if I increase n to even 40, 50 and all, this would exceed even 10 to the power 18 का range, long का range भी exceed हो जाएगा. So we cannot store this actually n factorial number in any variable. So what we can do is, instead of directly doing like this, so one way was calculate this 720 and then just answer 720 mod 15, whatever that is, that's your final answer. But instead of doing that, what you can do in order to avoid exceeding your range of int or long, when you do 6 into 5, okay, at that time you get 30, so 30 koi you do mod 15 and store 0. Okay, like 15 nahi, I should take 19. Okay, so usi time mod 19 करके make it 11. Then instead of doing 30 multiplied by 4, you do 11 multiplied by 4. Okay, and whatever, if you get 44, do a mod 19 and whatever you get, 29, 39, 38, 6. Okay, so then instead of doing whatever product you got then multiplied by 3, you can do, the result you got is 6 multiplied by 3. Okay, so I hope if you do in that way, you can compute it. So code would be simple. I'm just pasting the code, what you need to do there. Okay, so I have to compute factorial of x. I store the result. I start with result equal to 1. मैं loop चला रहा हूँ from 1 up till x, and in the result I multiply by I and take mod.
modulo m in each step. Okay, so this way we are able to avoid the overflow. Okay, तो जो numbers में हमारा overflow हो सकता था, ये हम avoid कर सकते हैं through this way. Okay, so I think ये clear होगा, and we use this all the time basically. जहाँ भी हमें कुछ भी product, factorial एंड एडिशन भी जहाँ एक्सीड कर रहा है हमारा लॉन्ग लॉन्ग रेंज, एंड फाइनली अगर हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलो एम ही देना है, देन इन बिटवीन द स्टेप्स वी टेक मॉड्यूलो एम सो दैट we don't exceed the range in between. Okay, so in between our calculation, wherever you get a multiplication, change it to mod m. Wherever you get a addition, use this property. Okay, so wherever you get addition, use this property. Wherever you get multiplication, use this. Subtraction, use this. For division, use this property. Okay, so this way you can do. I hope ये these were very basic things, ये clear होगा. Okay, so then Naman would continue forward. Hello, am I audible? Okay, so our next topic is binary exponentiation. So first of all, the motive is to find a raised to power b. So first tell me solution how you could find a raised to power b using brute force. Yes, so multiply a with itself b times. So the brute force solution is to run a loop b number of times and multiply a with itself to get our answer. So it has a complexity of order of b. It will take b times we are running the loop, so it is order of b. Now there is a what is the optimal approach to find this? We can actually do it in logarithmic of b using binary exponentiation. So what is binary exponentiation? See, binary exponentiation. So binary exponentiation is a fast exponentiation method in which we break the powers into halves. For example, if we are doing a raised to power b and b is even, so we divide b into b by 2 and b by 2 into two equal halves and calculate the exponentiation and then multiply it with itself. Similarly, if b is odd, we take the half which actually is the floor value. For example, if b is 7, b 7 by 2, it would give 3, which is the floor value of 7 by 2. And we will multiply with itself, but we will need an extra a to multiply. So the result is how the result is coming. First of all, at the lowest level, a is multiplied by itself, which gives a square. See, for this is an example for a raised to power 32. If we are calculating a raised to power 32, at the lowest level, result 1 will give a into a, which will be returned. Similarly, the result 1 will be used in the second time to calculate a raised to power 4. Similarly, it will be multiplied itself to calculate a raised to power 8, and like that we will get the answer a raised to power 32.
So this is just a small part, but an important part, which is used in CP. So there is the recursive solution is very easy. See, this is the recursive solution, the code of calculating binary exponentiation. A and B are passed. So this is the base case. If B becomes 0, that is the power is 0, we will return just 1, and we are calculating half the powers. That is binary exponentiation of A comma B by 2. This we are calculating and storing it in half. And if B is even, we are simply returning half into half. If B is odd, then we are returning half into half and an extra multiplication with A. This is the basic recursive solution. There is also an iterative solution for this. You can use, I'm pasting that too. You can check it after the class. So this is a small concept, but remember it is an important in many questions. Okay. So the next topic is GCD. Now Mehul will teach you about it. ओके जस्ट अ सेकेंड एक बार ये बता देना कि लाइक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या समझ में आया सबको और यस ओके ओके सो बेसिकली लाइक ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन इज जस्ट कि तुम्हें जब भी a टू द पावर b कैलकुलेट करना हो तो ब्रूट फोर्स अप्रोच वुड बी ऑर्डर ऑफ b बट यू कैन डू इन ऑर्डर ऑफ log b टाइम सो ये इन जनरल लाइक अगर तुम्हें नॉर्मली जस्ट a टू द पावर b कैलकुलेट करना है तो C++ में ऑलरेडी देयर इज अ फंक्शन ऑफ पाव ओके लाइक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का ये था बिकॉज अगर तुम्हें डायरेक्टली a टू द पावर b कैलकुलेट करना है देन इन C++ देयर इज ऑलरेडी अ पाव फंक्शन if you write pow a comma b internally it is implemented like this only ये तुम्हें log n टाइम में it would give you the result of a to the power b तो what is the need to know this algorithm ये भी तुम्हें like एक डाउट होगा कि there is already a predefined function in C++ to calculate a to the power b so what is the need to actually know this हाँ internally it implements like this only but let's suppose तुम्हें a to the power b थोड़ा bigger numbers के लिए find करना है and तुम्हें a to the power b नहीं a to the power b modulo m find करना है so in that case अगर तुम्हारा a is something like let's say even 100 and b is something like 100 so 100 to the power 100 would exceed all the ranges of long and all but तुम्हें अगर मॉड्यूलो m के रेंज में ही उसे फाइंड करना है सो नॉर्मली अगर तुम पाव फंक्शन यूज करोगे तो ये कोई मॉड्यूलो के रेंज में नहीं करता है तो
दिस वुड गिव यू सम गार्बेज वैल्यू अगर ये बहुत ही इट एक्सीड्स द लॉन्ग लॉन्ग रेंज एंड ऑल। सो तुम्हें अगर मॉडर्न करना है तो तुम्हें खुद से ही लिखना पड़ेगा ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन इफ यू वांट टू कंप्यूट इट इन लॉग एन टाइम। सो अगर तुम खुद से लिखना चाहते हो सो यू वुड हैव टू नो दिस एल्गोरिदम। सो आइदर रिकर्सिव और आइटरेटिव, जो भी तुम्हें इजियर टू अंडरस्टैंड लग रहा है वो उसे समझ लो। एंड इफ यू हैव टू डू मॉड्यूलो एम, इसी के साथ व्हाट यू कैन डू इज जहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या हाफ इंटू हाफ हो रहा है, यहाँ पे एक मॉडेम लगा दो। यहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दीज टू मल्टीप्लीकेशन के बाद एक मॉडेम लगा दो, या इंटू ए के बाद एक और मॉडेम लगा दो। तो जहाँ पे भी कोई मल्टीप्लीकेशन या एडिशन ऑपरेशन हो रहा है वहाँ मॉडेम लगा दो। दिस वे यू कैन कंप्यूट ए टू द पावर बी मॉड्यूलो एम। ओके, सो आई होप तुम्हें एक यूज केस इसका समझ आ गया होगा। एंड हाउ वी आर डूइंग इट, हाउ वी आर रिड्यूसिंग इट इनटू लॉग एन टाइम, ये भी एक फील आ गया होगा what we are actually doing. If you have to raise a to the power of 32, then हम half half करके raise कर रहे हैं। First we write it recursively, like a to the power b को we write it recursively a to the power b by 2, and whatever is the result of a to the power b by 2, multiply both of them. Then same way, if you recursively follow that, then you are dividing it by 2 by 2 by 2. So whenever there is something which is which gets divided by 2 by 2 by 2, so complexity is log base 2. So I think इसका proof का need नहीं होगा तुम्हें, I think feel तो समझ आ गया होगा। or is there a need for a proof for its complexity? Yep, and one more thing about power function is, as someone has written, वो return type उसका double होता है। So if it is exactly 25, it sometimes returns 24.9999। तो इसे अगर तुम इंटीजर में जस्ट कन्वर्ट कर दो, इट में गेट कन्वर्टेड टू 24। तो समटाइम्स ये रॉन्ग रिजल्ट भी देता है। तो वन वे टू यूज इट इज, जो भी ये रिजल्ट दे रहा है उसके आगे राउंड फंक्शन लगा दो तो तुम्हें इशू नहीं आएगा। और खुद से बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन खुद का फंक्शन लिख लो, बिकॉज दिस फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड टू गिव रिजल्ट्स इन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ओके, आई थिंक क्लियर है ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में, कोई डाउट किसी को? एक बार क्लियर है तो 1 लिख दो सब। ठीक है, मोहिल विल कंटिन्यू फॉर इट। हेलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसके आप लोग फैमिलियर तो होंगे ही। तो इट इज जो आपको मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो बता रहा है डेफिनेशन में, मतलब इसके नाम में जो है वही चीज बता रहा है। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर। जैसे कोई दो नंबर है 6 एंड 18 ले लो एग्जांपल में, 6 18, तो उसके कुछ कॉमन डिवाइजर्स बनेंगे तो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 6 और 18 में बन जाएंगे 1 2 3 6। अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो हो जाएगा 6 इसमें। ये हमारा बेसिक है। अब इसमें हमारा सीपीयू में क्या काम आएगा, जैसे इससे हम लोग का बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे और जो
लीड करेंगे तुम्हारे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर, और गिवन कंस्ट्रेंट है कि ये अभी तुम्हारा पूरे पावर 9 से कम है। तो इसका जैसे ब्रूट फोर्स जो सोल्यूशन होगा उससे हम लोग आंसर इक्वल टू मतलब वन, जैसे स्टार्टिंग नंबर ले लिया, फिर फॉर एंटी आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। मतलब हम लोग जो दो नंबर है उसके मिनिमम नंबर तक जाएंगे और उसमें हर नंबर के लिए चेक करेंगे कि वो नंबर वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, और इस हिसाब से हम लोग आंसर को अपडेट करते हुए जाएंगे। तो जैसे कि वही 6 और 18 का एग्जांपल था, तो इसमें 1 से लेके 6 तक चलेंगे, और उसमें 1 से चेक करेंगे, फिर 1 अपडेट होगा, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, फिर 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 4 के लिए चेक करेंगे। इसमें हम लोग 6 फ्रॉम 18, 6 तक चेक करेंगे और 6 में हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स। पर ये नॉर्मली तुम्हारा ब्रूट फोर्स सब लंबा चल जाएगा, तो इसके लिए हमारा एक अलग तरीका है जीसीडी निकालने का, तो आगे बताएंगे। उससे पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जीसीडी का, कि लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जी। अब दो नंबर है, उसका जीसीडी हमारा जी दिया हुआ है। तो अब जो हमारा ए है, ए को हम लोग सी जी लिख सकते हैं, एंड बी इज इक्वल टू डी जी। तो बी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी जी। तो जी इज डिवाइडिंग बी माइनस ए हम है। तो जीसीडी ऑफ ए, लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए इक्वल टू एक्स, एंड एक्स, तो as g is dividing b minus a, and g is also dividing a here. G is dividing a and g is dividing b minus a. So g will be less than equal to x because x is the GCD of a comma b minus a, and x divides a, and x also divides b minus a. Hence x also divides b because x equal to x equal to dg, d minus cg plus cg. So x is a multiple of x divides b minus a and x divides a. So x divides b. So g is a GCD of a comma b. Therefore g is greater than equal to x. तो g is equal to x। यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि g हमारा x से इक्वल टू है। तो अब हमारा जो प्रॉपर्टी था ये प्रूव हो रहा है कि GCD ऑफ a comma b इक्वल टू GCD ऑफ a comma b minus a। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो वही जीसीडी ऑफ ए, अब इसी प्रॉपर्टी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस टू ए। ऐसे चलते चलते जीसीडी जो हमारा हो गया ए कॉमा बी मॉड्यूल ए। रिमाइंडर थ्योरम जो मॉड्यूलर इन्वर्शन था उससे आ गया। ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिससे तुम्हारा इसका प्रूव है वो और क्लियर हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जीसीडी की। जीसीडी ऑफ 0 कॉमा एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जीसीडी ए कॉमा बी मॉड्यूल है, और जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा बी। ये हमारी जो इसकी थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी ए कॉमा बी माइनस ए, उसकी इन्वर्स है, इसी चीज की इन्वर्स है ये। अब वही जो ये क्वेश्चन था कि जीसीडी ऑफ टू नंबर हम लोग को निकालना होगा, तो इसमें जो हमारा जो ये मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था इसमें 1/9 चल जा रहा था। इसी को नॉर्मल तरीका से सॉल्व करने के लिए एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम है जो हम लोग दो तरीका से सॉल्व हो सकता है, एक रिकर्सिव एक इटरेटिव। मैं आप लोग को रिकर्सिव बता दे रहा हूँ। आईएनटी जीसीडी इक्वल टू आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी इफ बी इक्वल टू 0 रिटर्न ए। अब ये हमारा ये हो गया कि अगर बी 0 है तो हम लोग रिटर्न ए कर देंगे, या फिर रिटर्न जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूल बी। ये हमारा जो ये थ्योरम था, मतलब जो हम लोग प्रूव किए थे,
उसी का यूज करके रिकर्सिव पढ़ाया गया है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं 13,40। अगर हम 13,40 लेंगे तो b is not equal to 0, so it will go to second line gcd of b comma a module b. तो 13 40 divide 40 comma 13 divide by 40, so 13 module 40 would be 13, so the numbers would just be interchanged, because in this problem we will solve by a is greater than b. If it is not, it will just reverse the numbers. So 13 comma 40 just becomes 40 comma 13, and now we will b equal to a, so 13 comes here, and 40 divide 40 module 13, so it will become 1. Now b equal to a, so 1 here, and 13 module 1 equal to 0, and now we got b equal to 0, so we'll return 1. अब इसका एक iterative approach भी है जो आप लोग का सोचिएगा, वो मैं पेस्ट कर दूंगा उधर डॉक पे। हाँ, इसके बिल्ट इन फंक्शन हमारा इसमें आता है एक सी प्लस प्लस, वी हैव ए बिल्ट इन फंक्शन। जैसे ये हमारा हो गया तुम लोग को लॉजिक समझाने के लिए कि इसमें तुम पहले या तो नॉर्मल तरीका से कर सकते हो, और इसका ये हमारे हो गया यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जिसको आप रिकर्सिव से समझो, इटरेटिव समझो। पर अब सीपी में तुम लोग को जल्दी जल्दी सॉल्व करना रहेगा, तो हर बार तुम जीसीडी निकालने नहीं बैठोगे, तो इसमें यहाँ पे जीसीडी के लिए इनबिल्ट फंक्शन है, तो उसको तुम यूज करके निकाल सकते हो। तो ये डबल डैश जीसीडी यूज करके। आगे अब अभिनव सर कंटिन्यू करेंगे। लाइक ये जीसीडी का एल्गोरिदम क्लियर हुआ सबको? ओके, ओके। तो लाइक इन मोस्ट केसेस तुम्हें नॉर्मली जीसीडी निकालना है, सो यू वुड डायरेक्टली यूज दिस बिल्ट इन फंक्शन, जो कि तुम्हें लॉग इन टाइम में जीसीडी कैलकुलेट करके दे देगा। सो इन जनरल मुझे कभी कोड में ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड इवन लाइक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में, जैसा कि मैंने बोला, देयर इज ऑलरेडी अ बिल्ट इन फंक्शन, बट फॉर द केस जहाँ तुम्हें मॉडर्न वाला चीज करना है तो खुद से लिखना पड़ेगा। बट फॉर दिस जीसीडी केस तुम्हें लाइक ऑलवेज ये फंक्शन से तुम्हारा काम चल जाएगा। बट व्हाट इज द नीड टू नो दिस अगेन, दिस एल्गोरिदम एंड दिस प्रॉपर्टी? बेसिकली द मेन थिंग इज दिस प्रॉपर्टी। सो ऑल्दो तुम्हें लाइक ये एल्गोरिदम कभी एग्जैक्टली लिखना ना पड़े, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिदम की हाउ मेनली दिस प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें समझ में आ गया कैसे हम लॉग इन टाइम में कैलकुलेट करें यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इन मोस्ट ऑफ द लाइक सीपी के क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्ट तुम्हें कुछ, हाँ, दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करके बस डायरेक्ट लिख दिया है, गिवन ए बी कैलकुलेट जीसीडी कैलकुलेट। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो रहते नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुछ एक ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे कहीं तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि इसका यूज करना है, बट तुम्हें क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई एंड एरर करके कुछ ऐसे वैसे ट्विस्ट करके सोचने पे तुम्हें मे भी समझ आए कि हाँ, यहाँ जीसीडी में वर्क, शायद
जीसीडी का यूज हो सकता है यहाँ पे, या ये करना पड़ सकता है। तो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टीज पता है, देन इट विल हेल्प यू थिंक। ये मेन चीज है। अगर ये कैसे ये प्रॉपर्टी डिराइव हुआ एंड ये सब, अगर ये तुम थोड़ा मैथमेटिकली एनालाइज करो दिमाग में, देन दिस वुड बेसिकली हेल्प यू थिंक। ये मेन पर्पस है, बिकॉज इन मोस्ट क्वेश्चंस लाइक सीपी में तुम्हें मैथमेटिकल टाइप्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ कुछ फैक्टर्स का यूज हो रहा हो, कहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एलसीएम जीसीडी दीज थिंग्स का यूज हो रहा होगा, बट उसका यूज करना है ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि ये सब थोड़े मैथमेटिकल फैक्ट्स तुम्हें पता हो, सो दैट इट विल अलाउ यू टू थिंक। किसी को कोई डाउट है क्या? तो और अगर नहीं डाउट है तो मे बी गलती से भी अनम्यूट हो गया तो म्यूट कर लो। डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज द मेन थिंग। तो आई होप इसका लाइक एक तुम्हें इंट्यूटिव प्रूफ समझ में आया हो कि जब भी मैं दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करूं, देन ए इज अ मल्टीपल ऑफ, if I'm assuming their GCD is G, A is a multiple of G and B is a multiple of G, तो उनका जो sum होगा that would also be a multiple of G. That's why this property comes. And same way उनका जो difference होगा that would also be a multiple of G. So from that this property comes. And जैसा कि like बताया था, एक बार फिर से उसको पेस्ट कर देना, आई थिंक वो रिमूव हो गया। तो जो प्रूफ था फ्रॉम A, this one to GCD of A comma B modulo. Okay, so ये प्रॉपर्टी भी बेसिकली विच हेल्प्स यू राइट द यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। नाउ लेट्स डिस्कस अ प्रॉब्लम। ओके, आई एम पेस्टिंग अ प्रॉब्लम इन द डॉक, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू ये प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें यू आर गिवन एन एरे, okay, let's say this is an array given to you 4 6, or set of integers you can say. Okay, so you are given a set of integers of size n. Along with that तुम्हें q queries दिया गया। In every query you are given some x, and for that x you need to just answer whether you can form that x using the numbers from the set. Okay, so like यहाँ पे if you are given 2, for that query, for 2 you have to answer whether you can form 2 using 4 and 6, and you can use additions and subtractions. So you can form 2 using 6 minus 4, that would give you 2. So that's why your answer was yes. Okay, and same way for 5, like there is no way to form 5 using only 6 and 4s. So that's why your answer was no. For 8, you can use, how can you form 8 using 6 and 4? You can use 4 plus 4. Okay, 2 times 4 use करके you can form 8. That's why your answer was yes. And for 9 there was no way to form. Okay, so I hope you can understand, using these numbers given in the set you can do anything. You can use them multiple times, you can do additions, subtractions, anything, and you need to form that x. So you just need to answer whether you can form that x or not. Okay, like is the problem clear to you? ये एक बार बता दो चैट में। Okay, and the constraints for this problem is n is given up to the range of 10 to the power 5, q is given to the range of 10 to the power 5. Okay, so किसी को कोई भी अप्रोच आए what we can do, how can we solve this problem, तो you can write in the chat या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हो।
हाँ, लाइक किसी ने लिखा है चेकिंग क्वेरी इज डिविजिबल बाय द जीसीडी ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। तो हियर योर एरे कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, 4 6 9 15, इट कैन बी ऑफ साइज n। ओके, तो इसमें क्या सिर्फ 4 एंड 6 का जीसीडी से डिविजिबल है या नहीं चेक करना वुड बी सफिशिएंट? लाइक अगर मुझे ये दिया गया एरे, देन जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 वुड बी 2। तो अगर मुझे 9 फॉर्म करना है, यू वुड आंसर अ नो दैट 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, बट आई कैन डायरेक्टली यूज अ 9 एंड फॉर्म दिस। एंड किसी ने लिखा है इट इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ जीसीडी ऑफ a प्लस b, जीसीडी a माइनस b, a b। आई थिंक जीसीडी ऑफ a प्लस b, a माइनस b, a b, सबका जीसीडी इज सेम एज जीसीडी ऑफ a कॉमा b, तो वो फर्क तो नहीं पड़ रहा है। एंड अगेन सिर्फ टू नंबर्स हम नहीं लेंगे एज आई शोन हियर। एंड किसी ने लिखा है जीसीडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक? इफ we take the GCD of all the elements of the array A, then हमें क्या चेक करना है? Whether that X is divisible by G. Is it query X into GCD of all? Okay, I think Shayan, you are right. जो तुमने लिखा है कि what we need to do is just take the GCD of all the elements, and if my query is a multiple of that GCD, then I answer a yes, otherwise I answer a no. Okay, so I'll explain you why that works. First of all, so the solution here is, okay, I've been given, मुझे एक array of elements दिया गया है, ठीक है? Okay, let's suppose for now, let's suppose दो ही elements है, 4 and 6 या कोई दो elements है। Then what I am telling कि मेरा solution क्या है? I would take जितने भी elements है सबका GCD में ले लूँ। Let's say इस केस में GCD of 4 and 6 would be 2. Okay, then मैं बोल रहा हूँ for every query I would check whether X, if X is divisible by this GCD, I'm telling it G. If X is divisible by this GCD, then I answer a yes, else I answer a no. Okay, this is my solution. अब मैं बताता हूँ why this works. First of all, तुम्हें like क्या करना था? Basically, for each query you have to check for a X कि क्या तुम इस X को बना सकते हो using the elements of the array A1, A2, A3, an. These are the elements of the array. You have to check कि क्या इन elements का यूज करके मैं x बना सकता हूँ। ओके, लेट्स सपोज फॉर नाउ मेरे पास दो ही एलिमेंट्स है एरे में, a1 एंड a2। ओके, a1 एंड a2 का यूज करके मैं क्या क्या वैल्यूज बना सकता हूँ इफ यू थिंक अबाउट इट। तो आई हैव मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। तो या तो मैं a1 को a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a1 माइनस ए टू समथिंग लाइक दैट मैं लिखूंगा। इफेक्टिवली दिस वुड बी व्हाट कि a1 को मैं सम इंटीजर टाइम्स लूंगा एंड सम इंटीजर m टाइम्स a2 में लूंगा। नाउ दिस n एंड m कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अगर मैं n का वैल्यू इज -2, दैट मीन्स मैं टू टाइम्स माइनस a1 कर रहा हूँ। एंड इफ लेट्स से n का वैल्यू इज 3, दैट मीन्स मैं 3 टाइम्स प्लस कर रहा हूँ a1 को। ओके, सो इफेक्टिवली मैं कुछ भी करूँ, द नंबर्स दैट आई कैन मेक वुड बी दिस, वेयर n comma m belongs to integers. Okay, either positive or negative integers. Okay, so अब let's suppose my GCD of, let's suppose my GCD of a1 and a2, इसका GCD is g. So what would this number, अगर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर GCD is g, that means a1 is some integral multiple of g. Let's say that is n times g. Okay, and a2 is some m times g. Here again n and m are integers.
So a1 can be written as n times g, and a2 in the same way can be written as m times g. Okay, so यहाँ पे n, m, n, m, all of them are integers. Okay, so this is effectively g को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, so n into small n plus capital M into small n. So this number that I get is actually a multiple of g. तो इससे बेसिकली ये प्रूफ हो गया, whatever number I can make has to be a multiple of g, where g is the GCD of the two numbers. ठीक है, ये मैं बस two numbers के लिए अभी प्रूफ कर रहा हूँ. तो इससे ये तो प्रूफ हो गया, अगर वो नंबर इस g का मल्टीपल नहीं है, देन माय आंसर वुड बी नो, दैट आई कैन नॉट मेक. बट अगर इसका मल्टीपल है, इफ दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ g, क्या मैं ऑलवेज उस नंबर को क्रिएट कर सकता हूँ? सो इसके लिए भी इसका एक मैं थोड़ा इंट्यूटिव प्रूफ तुम्हें दे सकता हूँ कि यस यू कैन ऑलवेज क्रिएट, कि जी के जो भी मल्टीपल्स है तुम सबको बना सकते हो. वन मेन थिंग इज इफ यू कैन फॉर्म जी, let's suppose you want to form using a and a1 and a2. If you can form g where g is the GCD of a1 a2, then let's say g is some n times a1 plus m times a2. तो अगर तुम using picking some value of n और m का कुछ values तुम ऐसा pick कर पाओ so that you can make g, then you can make all the multiples. If you want to make 2g, you can pick 2n एंड 2m. ठीक है, जो भी n और m का इनिशियल वैल्यू तुमने पिक किया था टू मेक g, यू कैन टेक 2 टाइम्स ऑफ दैट टू मेक 2g. और सेम वे अगर तुम्हें 3g बनाना है, देन यू कैन टेक 3 टाइम्स n एंड 3 टाइम्स m. सो इफ यू कैन मेक g, यू कैन एक्चुअली मेक ऑल द मल्टीपल्स ऑफ g. ये भी प्रूफ हो गया. अब हाउ डू यू प्रूफ कि यू कैन मेक g? तो इसका एक मैं इंट्यूटिव प्रूफ दे सकता हूँ. बेसिकली जो यूक्लिडियन एल्गोरिदम था, व्हाट इज जी? जी इज एक्चुअली GCD ऑफ a1 एंड a2. ये है जी. तो यू कैन एक्चुअली राइट इट, इसे GCD ऑफ a1 कॉमा a2 माइनस a1, इस फॉर्म में तुम रिकर्सिवली इसे लिख रहे थे टू गेट जी. तो wherever you do minus a1, so what you can write, to find the exact value of n and m. यूक्लिडियन एल्गोरिदम के साथ साथ ही तुम इस n और m को कैलकुलेट कर सकते हो. इसे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी बोलते हैं हम. इफ यू वांट टू एग्जैक्टली कैलकुलेट कि a1 एंड a2 का यूज करके हम g कैसे बनाएं, तो a1 a2 का यूज करके g बनाने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ n एंड m, ये तुम्हें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है. तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम के साथ ही फॉर्म हो जाता है, विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम. तो आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ दैट करेंटली. तुम अगेन इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर लूंगा, तुम जाके रीड कर सकते हो. इसका एक प्रूफ का नीड नहीं है अभी, बट जस्ट नो दिस फैक्ट कि whenever we have two numbers, then उसका जो GCD है, we can always make that GCD using अगर हम some n and m. Okay, so just know this fact. बाकी तुम्हें एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक टू द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम. इससे तुम एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ n and m कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि why we can always form g, और अगर हम g हमेशा फॉर्म कर सकते हैं, we can form all the multiples of g. and you know, कोई भी नंबर हम जो बनाना चाहते हैं, that should be a multiple of g. अगर नहीं है, then my answer is no. So this was for two numbers. Same way, if you want to extend for n numbers, so what I can write, let's say the GCD of all the n numbers is g. So I can write, first of all, इसको मैं whatever number x I would try to form, वो क्या होगा?
n1 टाइम्स a1 प्लस n2 टाइम्स a2 प्लस n3 टाइम्स a3। यही होगा कोई भी x जो मैं बनाना चाहता हूँ, वेयर दीज आर ऑल इंटीजर्स। एंड अगेन दिस a1 a2 a3 को मैं लिख सकता हूँ, सिंस इन सबका जीसीडी इज जी, दे आर सम मल्टीपल ऑफ, लेट्स से सम मल्टीपल ऑफ जी। ओके, तो सबको मैं उस तरह से लिख सकता हूँ। अगेन आई वुड गेट जी कॉमन एंड सम इंटीजर्स। तो सेम वे यू कैन प्रूव इट कि तुम एन नंबर्स का जो जीसीडी होगा, अगर तुम कुछ भी नंबर फॉर्म करना चाहते हो तो यू कैन यूज फॉर्म इट दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ दैट जी। अगर नहीं है देन योर आंसर इज नो, और अगर है तो इन सारे नंबर्स का यूज करके कोई जी बनाना, इसे तुम रिकर्सिवली कर सकते हो। पहले दो नंबर्स का यूज करके तुम जी बना लो, ओके, देन दैट जी एंड a3 का यूज करके अगेन जी बना लो, ओके, लाइक इसका यूज करके इनका जो जीसीडी है वो बना लो, देन उसका a3 के साथ यूज करके इनका जो जीसीडी है वो बना लो, देन उसका a4 के साथ यूज करके उसका जीसीडी बना लो। सो रिकर्सिवली करके you can always form the overall GCD. Okay, so अभी for this problem exact values of n1 n2 n3 was not required, तुम्हें सिर्फ yes no बताना था। So solving this problem was pretty simple. Okay, let's let's say मैं कोड भी इसका लिख देता हूँ। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द इनपुट एन इंटीजर्स। तो मैं एन इंटीजर्स का इनपुट ले सकता हूँ। ओके, तो मैंने एक एरे ऑफ एन इंटीजर्स एज अ इनपुट ले लिया, एंड मुझे क्या करना है, उन एन इंटीजर्स का जो भी जीसीडी होगा वो कैलकुलेट कर लेना है, एंड देन एवरी क्वेरी में जस्ट चेक करना है वेदर डिविजिबल और नॉट। तो मैं एक जीसीडी के लिए वेरिएबल असाइन कर लूंगा। ओके, वन मोर थिंग कि जैसा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें बताया गया था एक, दैट जीसीडी ऑफ एनी नंबर विद जीरो इज दैट नंबर। तो अगर मुझे लाइक सारे नंबर्स का जीसीडी लेना है, वन वे इज तुम एज अ इनिशियल इंटीजर को फर्स्ट वैल्यू से असाइन कर सकते हो, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम लूप में ही वो करो, तो तुम इनिशियल एक वेरिएबल को जी इक्वल टू जीरो असाइन कर सकते हो, देन उसके साथ जब तुम जीसीडी करते जाओगे सारे नंबर्स का, देन बेसिकली जब फर्स्ट नंबर को तुम जीसीडी करोगे, जीरो जीसीडी विथ a1 वुड गिव यू a1, तो तुम्हें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। सो तुम्हें जी को a1 से इनिशियलाइज करके, लाइक फर्स्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करके आगे से लूप कंटिन्यू वो भी कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो वे। ये ध्यान रखना जब भी तुम्हें, लाइक तुम्हें अगर सम करना है, सम ऑफ एन एरे करना है, तो तुम इनिशियलाइज करते हो जीरो से अपने वेरिएबल को। प्रोडक्ट ऑफ एन एरे करना है तो इनिशियलाइज वन से करते हो। सेम वे अगर जीसीडी ऑफ एन एरे करना है तो इनिशियलाइज जीरो से करते हो। ये बस ध्यान रखना, बाकी यू कैन डू इट इन एनी वे। g is underscore underscore gcd is the function that we can use, g comma ai। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा। So this way you can calculate the GCD of the whole array in G। उसके बाद you have to take the Q queries। Okay, every query में तुम्हें एक integer x as input मिल रहा है, और तुम्हें बस चेक करना है if that x is divisible by G, then I would answer a yes, otherwise I would answer a no। Okay, that's it that you have to do। Like जो मैंने सैंपल दिया था उस पे वर्क करके देख लेते हैं। ओके, ओनली 4 6 मैंने इनिशियली दिया था। Array size is 2, it is 4 6, and then we have 4 queries which are 2 5 8 and 9, 2 5 8 9। Okay, so I got yes no yes no, yes no yes no, as it was expected। ठीक है, I hope ये क्लियर है सबको। Is there any doubt in this?
ये कोड मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर क्लियर है ये प्रॉब्लम तो एक बार यस लिख दो। विल इट वर्क इफ जीसीडी कम्स आउट टू बी 1? यस, अगर जीसीडी 1 है व्हाट डज दैट मीन? कि पूरे एरे का जीसीडी 1 है, दैट मीन्स वी कैन फॉर्म एवरी नंबर। अगर मैं 1 फॉर्म कर सकता हूँ देन 2 3 4 5 सब कुछ फॉर्म कर सकता हूँ। सो दिस सेम कोड वुड वर्क, क्योंकि कोई भी x मॉड्यूलो 1 वुड ऑलवेज गिव मी 0, सो 1 से सारे नंबर्स डिविजिबल है, तो मेरा आंसर हमेशा यस ही होगा। सो अगर फुल एरे का जीसीडी 1 हो गया तो मेरा आंसर हमेशा यस होने वाला है। आई कैन फॉर्म एवरी नंबर यूजिंग दोज नंबर्स। ओके, सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? ओके, तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एलसीएम। आई थिंक एलसीएम सबको पता होगा क्या होता है। ओके, व्हाट इज एलसीएम? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि जीसीडी वाज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, ग्रेटेस्ट divisor of the numbers, but LCM here is the multiple, the least common multiple of that number. So ये प्रॉपर्टी क्या सबको पता है? ये शायद मैथ्स में तुमने पहले भी पढ़ा हो, और अगर नहीं पता है तो अब जान लो दैट LCM LCM multiplied by GCD is actually the product of the two numbers. So if you want to calculate LCM, तुम GCD निकाल सकते हो of the two numbers and then LCM would be product of them divided by GCD. So LCM निकालने का तरीका यही है कि तुम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से जीसीडी निकाल लो इन लॉग एन टाइम, और यू कैन यूज द already predefined function in C++ underscore GCD to find the GCD, and then your LCM would be A into B by GCD. तो बस इतना था यू शुड नो अबाउट LCM। लेकिन देयर वुड बी लाइक मेनी प्रॉब्लम्स जहाँ पे, जैसा कि अभी ये एक एग्जांपल प्रॉब्लम मैंने दिखाया जहाँ तुम्हें जीसीडी करना था, बट तुम्हें लाइक एक बार में ये प्रॉब्लम को देख के समझ में नहीं आएगा कि इसमें जीसीडी करना है। तो इसलिए लाइक विथ प्रैक्टिस तुम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे और ये थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें दिमाग में रखोगे तो तुम्हें मोर इजली क्लिक होगे प्रॉब्लम्स। सीपी इज ऑल अबाउट दैट ओनली। सेम वे लाइक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहाँ तुम्हें एलसीएम ऑफ द नंबर्स का कुछ यूज़ करना होगा टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। तो तुम्हें ये दिमाग में रखना है बेसिकली कि क्या होता है एलसीएम एंड हाउ डू वी गेट टू दैट। ओके, तो बेसिकली जहाँ भी एलसीएम कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट दैट तुम लॉग एन टाइम में कर सकते हो। जीसीडी कैलकुलेट कर लो लॉग इन टाइम में एंड दिस डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस। ओके, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। एक चीज इसमें ध्यान रखना, समटाइम्स ये हो सकता है दैट लेट्स से ए इज समथिंग लाइक 10 to the power 18 and b is something like 2 into 10 to the power 18, okay, समथिंग लाइक दैट अगर ये ए और बी दिया है, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो क्या करोगे तुम लिखोगे जीसीडी, तुम कैलकुलेट करोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी ए कोमा बी से तुम जीसीडी कैलकुलेट कर लोगे, ये तुम्हें जीसीडी दे देगा। देन एलसीएम को तुम लिखोगे और एलसीएम इज ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जी। ओके, बट अगर तुम इस तरह से लिखते हो तो इससे क्या होगा, जब पहले ए और बी मल्टीप्लाई होगा, ए और बी मल्टीप्लाई होके इट वुड एक्सीड योर लॉन्ग लॉन्ग का रेंज। ये 10 टू द पावर 18 इंटू 2 इंटू 10 पावर 18 वुड बी 2 इंटू 10 टू द पावर 36। तो
ये तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग रेंज को एक्सीड कर सकता है। ऑल्दो ये ए भी लॉन्ग लॉन्ग में ही था, बी भी लॉन्ग लॉन्ग में ही था, और इनका जो एलसीएम आएगा वो भी लॉन्ग लॉन्ग में होगा। इनका एलसीएम वुड बी 2 × 10⁻18 ओनली। तो वो भी रेंज के अंदर ही है तुम्हारा। बट इस तरह से कैलकुलेट करने में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तुम्हें गार्बेज वैल्यू मिल जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय जी करने से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ इसका जीसीडी वुड कम आउट टू बी 118 एंड एलसीएम शुड हैव बीन 118 इंटू 218 डिवाइडेड बाय 118। बट ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा रेंज एक्सीड कर दे जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दैट, यू शुड राइट ए डिवाइडेड बाय जी इंटू बी। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना, तुम एलसीएम को इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए इंटू बी बाई जी, राइट ए डिवाइडेड बाई जी इंटू बी। सो ए वुड गेट डिवाइडेड बाई जी टू गिव यू रिजल्ट ऑफ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई बी वुड बी 218। सो ये तुम्हारा रेंज एक्सीड नहीं करेगा। ओके, सो ये एक चीज जस्ट ध्यान में रखना। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि डू यू नो व्हाट अ प्राइम नंबर इज? ओके, लाइक बिफोर मूविंग टू प्राइम नंबर एक और चीज देख लेते हैं। दिस इज नॉट इंट्यूटिव। लाइक यू आर आस्किंग कि ये इंट्यूटिव क्वेश्चन नहीं है, तो फॉर स्टार्टर्स शुड वी गिव फॉर सच न्यू प्रॉब्लम्स? जब ये प्रॉब्लम्स तुम करोगे उसके बाद ही लाइक तुम्हें ये इंट्यूटिव लगना शुरू हो जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट, अभी जो मैंने प्रॉब्लम दिया इसके बारे में बात कर रहे हो ना? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम ओनली ना? तो द मेन थिंग इज कि जब तुम ऐसे प्रॉब्लम्स को और करोगे मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू नो दीज प्रॉपर्टीज, इसलिए लाइक ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी लाइक इज नॉट समथिंग बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये थोड़े थोड़े लाइक कॉमनली यूज्ड एंड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, जो तुम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करोगे, वंस यू हैव सीन दिस प्रॉब्लम, अब कोई ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का यूज कहीं दूसरे प्रॉब्लम में आएगा तो तुम्हें तुरंत ही दिमाग में क्लिक करेगा दैट हाँ, ऐसा कुछ मैंने पहले किया था, आई कैन यूज जीसीडी हियर। तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीपी। तुम जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे इट इम्प्रूव्स लाइक दैट। तो हाँ, ये तो प्रॉब्लम इट्स नॉट वेरी टफ और ऐसा कुछ। और खासकर जो क्लास में तो करवा रहे, दीज आर मोस्टली स्टैंडर्ड थिंग्स, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यू शुड डू इट। ये ओके, सो ओके, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई थिंक इसका एल्गोरिथम मोस्ट लोग को पता हो या ना हो। यू आर जस्ट गिवन n, यू नीड टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। ओके, सो ये कैसे करते हैं? फर्स्ट टेल मी व्हाट कुड बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एंड बेटर अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दैट वुड बी just iterate from 1 to n and check if I is a factor of n। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अगर मुझे एक इंटीजर n दिया है एंड मुझे फाइंड करना है ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n, देन व्हाट आई कैन डू कि मैं 1 to n में आइटरेट करूं एंड एवरी इंडेक्स को चेक, एवरी वैल्यू को चेक करते जाऊं। अगर ये फैक्टर है देन एड इट टू योर आंसर। सो दिस वे ऑर्डर ऑफ n में यू कैन कंप्यूट दिस। पर क्या हम इसे कोई बेटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर सकते हैं? आइटरेट फ्रॉम 1 to √n। ओके, सो 1 to √n में हम कैसे कंप्यूट कर पाएंगे ऑल द फैक्टर्स? If let's say n is given as 20,
So all the factors of n would be 1 is a factor, 2 is a factor, 4 is a factor, 5 and 10 and 20 itself. ये सारे मेरे factors of 20 है. Okay, if x is a factor, n by x is also factor. तो I hope ये मे भी पता हो मुझ लोग को, नहीं भी पता हो, so no issues. If I have to find all the factors of a given integer, what I can do is iterate from 1 to the square root of n. Okay, तुम्हें पूरा iterate करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेके square root तक n के of n तक ही iterate करो. Like 20 का square root is somewhat between 4 and 5. So iterate till 4 only. तो 1 to 4 ये 3 नंबर्स तो तुम्हें मिल जाएगा वो iterate करके. What about the other factors? ये कैसे तुम्हें मिलेगा? तो एक्चुअली इफ यू लुक, किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमेशा पेयर में ऑकर कर सकते हैं. अगर 1 है देन 1 into 20 is 20. So अगर 1 is a factor, then n by x, which is 20, is also a factor. If 2 is a factor, then 20 by 2, which is 10, is also a factor. तो ये जो 6 फैक्टर्स थे, दे ऑकर इन पेयर, 1 and 20, 2 and 10, 4 and 5. ओके, एंड इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर 25 होता तो यहाँ पे 5 into 5 आ जाता, तो उस पेयर में बोथ नंबर्स वुड बी सेम, सो एक सिंगल नंबर होगा. तो एक और प्रॉपर्टी लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट वुड हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट वुड हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स. आई थिंक ये प्रॉपर्टी मुझे लाइक लिखने की जरूरत है, या इट्स अंडरस्टैंडेबल. बट ओके, यहाँ पे मेरा एम क्या था, आई हैव टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स. तो मैं अगर स्क्वायर रूट एन तक आइटरेट करूँ, यानी 4 तक आइटरेट करूँ, तो जब मुझे 1 मिला तो मैं साथ में 20 को भी ऐड कर दूंगा, n बाई एक्स को भी मैं ऐड करते जाऊंगा. अगर मुझे x मिल रहा है सो n बाई एक्स को भी ऐड टू योर आंसर, x मिला सो n बाई एक्स को भी ऐड टू योर आंसर. So this way, in order of sqrtn, we can compute all the factors of a number. तो आई होप ये अप्रोच क्लियर है सबको. इसका कोड मैं बाद में डॉक में पेस्ट कर दूंगा, और तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए वैसे कोड तो. ठीक है, आई थिंक अप्रोच अगर क्लियर है तो जस्ट राइट अ 1 इन द चैट. अगर डाउट्स हो, किसी को कुछ लाइक नहीं समझ आओ, तो यू कैन 0 भी लिख सकते हो, या नहीं समझ आया भी लिख सकते हो, कुछ चैट में बता सकते हो. देयर इज नो इश्यूज. ओके, आई गेस सबको क्लियर है ये. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है विच यू शुड नो, is the upper bound on the number of factors of a integer n is order of cube root of n. Okay, ये like it's just a mathematical property जो तुम्हें like एक पता होना चाहिए, which would help you sometimes to solve some problems. Like अगर मुझे if I'm given some 20, इसके कितने factors हैं? There are total of 6 factors. So if you take the cube root of 20, it would be like 3, between 3 to 4. So it's 2 times 3. Okay, so जो क्यूब रूट ऑफ n होगा, इट वुड बी समवेयर अराउंड 2 times 3 times क्यूब रूट ऑफ n एट मैक्स, और उससे कम भी हो सकता है. लाइक प्राइम नंबर है तब तो 2 ही फैक्टर होगा. दिस इज एन अपर बाउंड. ओके, सो अगर मुझे लाइक समटाइम्स इफ लेट सपोज n का रेंज इज गिवन एज 10 to the power 6. सो इफ आई वांट टू कि मुझे
कहीं कोड में कुछ ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि मुझे n के सारे फैक्टर्स पे आइटरेट करना है, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ n कैन बी कंप्यूटेड इन स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम, बट जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मुझे मिलेंगे, अपर बाउंड ऑन दैट वुड बी क्यूब रूट ऑफ n. सो क्यूब रूट ऑफ 196 इज 100, so मैक्स टू मैक्स 200 300 इतने ही मुझे फैक्टर्स मिलने वाले हैं फॉर एनी इंटीजर n in the range from 0 to 10 to the power 6. So ये एक प्रॉपर्टी है विच वुड समटाइम्स हेल्प यू टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मे बी अगर तुम इसे स्क्वायर रूट n एज्यूम कर रहे थे तो 10 to the power 3 आता, बट वो एक स्लाइट चेंजेस, क्योंकि ये 10 to the power 2 ही फैक्टर्स है और तुम्हें उसमें ही आइटरेट करना है, देन उसके अंदर में भी तुम कुछ अलग एल्गोरिदम यूज कर रहे होगे, तो ये वाला चीज कभी कभी हेल्प कर देता है, that the total number of factors is actually quite less. It's not in the range of square root n, but it's in the range of cube root n. Okay, so just know this property. Okay, now let's discuss next what is prime numbers. Okay, okay, कोई एक बार चैट में बता दो प्राइम नंबर क्या होता है. Only two factors, one and n. Okay, so I hope सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है. So प्राइम नंबर इज नंबर जिसका which only have exactly two factors. वन जो कि सबका फैक्टर होता है और द नंबर इटसेल्फ जो कि सबका फैक्टर होता है. इसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो जिस नंबर में, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. सो योर टास्क इज check whether a number is prime or not. Okay, so your task is basically given n, check whether n is prime or not. Okay, so what would be the time complexity जिसमें तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. So brute approach would be you just iterate from 1 to n, सारे numbers में iterate करो और check whether it is a factor or not. So like 2 से n minus 2, if you iterate from 2 to n minus 1, अगर इस रेंज में किसी भी नंबर के लिए तुम्हें मिल गया that number is a factor of n, then directly return that your answer is no. Okay. So इसका complexity क्या आएगा? It would be order of n. Okay, that's the brute force approach. But क्या इससे better हम कर सकते हैं? Okay, iterate up to square root 10. Okay, ठीक है, you guys are right. अभी जस्ट इससे पहले मैंने जो किया था कि किसी नंबर के सारे फैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, देन आई कैन डू इट इन स्क्वायर रूट n बाय आइटरेटिंग ओनली अप टिल स्क्वायर रूट n. तो सेम वे मैं इसमें भी कर सकता हूँ. आई कैन आइटरेट ओनली अप टिल स्क्वायर रूट n, और मुझे कोई भी ऐसा फैक्टर मिल गया विच इज नॉट 1 और n, देन आई डायरेक्टली से दैट नंबर इज not a prime number. Okay, so like मुझे 1 से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज 1 और n आएगा एज अ फैक्टर दैट आई ऑलरेडी नो. सो आई कैन जस्ट आइटरेट फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट n, एंड सिर्फ इतने में ही इफ आई फाइंड दैट एनी नंबर i इज अ फैक्टर, देन आई कैन डायरेक्टली से नो. तो अगर वो नंबर प्राइम होगा, प्राइम नहीं होगा, देन इट वुड हैव अ फैक्टर इन बिटवीन 2 टू स्क्वायर रूट n. अगर इस रेंज में उसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट n टू n वाले रेंज में भी उसका फैक्टर नहीं होगा. Okay, so this way we can solve the problem in order of SQRTN. Okay, so
ये प्रॉब्लम तो ठीक है। लेट्स सपोज आई गिव यू अनदर प्रॉब्लम जहाँ पे तुम्हें दिया है कि गिवन फ्यू क्वेरीज in every query given x, find whether x is prime or not. Okay, and q can range up till 10 to the power 5. The number x can range up till, let's say, 10 to the power 6. Okay, how will you solve this problem? Let's say queries are also up till 10 to the power 6. Okay, तो अगर ऊपर वाला अप्रोच हम लगाते हैं, then for every query मैं square root of x time में I can compute whether the number is prime or not. So one approach is just for every query okay, so इसका overall time complexity आएगा order of q into sqrt x, or this would range 1e6 into 1e3 which would be 1e9. so ये मुझे TLE दे देगा. okay okay so जो normal आइट्रेट करके स्क्वायर रूट n तक आइट्रेट करके प्राइम चेक करने का अप्रोच है. In this case, this would give me TLE because for every query, I am requiring 1e3 operations to check. So a better approach is, as many people have written in the chat, using Sieve of Eratosthenes. So this is a basically algorithm which you need to know. Okay, so ये एल्गोरिदम क्या करता है? दिस इज एन एल्गोरिदम टू प्री कंप्यूट बेसिकली अप टिल n सारे नंबर्स को आई कैन प्री कंप्यूट वेदर दैट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. तो बिफोर गोइंग टू दीज क्वेरीज अगर मैं पहले ही 1 से लेके 10 टू द पावर 6 तक सारे नंबर्स को प्री कंप्यूट कर लूँ वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, देन आई कैन आंसर एवरी क्वेरी. लाइक मैं प्री कंप्यूट करके एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ फॉर एवरी नंबर एक बुलियन वैल्यू वेदर इट इज प्राइम और नॉट. देन फॉर एवरी क्वेरी in order of 1 I can just directly say whether it is prime or not by checking from that array. So that way I can compute it optimally. So let's look at this algorithm which is sieve of Eratosthenes. Okay, so इस algorithm में what we do is तो तुम्हें क्या compute करना है? You have to check all numbers from 1 to some n whether okay. So how do you check that? तो ये चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स सपोज तुमने सारे नंबर्स को ओके इनिशियली मैं मार्क कर ले रहा हूँ दैट ऑल नंबर्स आर नॉट प्राइम. इनिशियली मैं सबके आंसर को 0 मार्क कर ले रहा हूँ कि दीज नंबर्स आर नॉट प्राइम. ओके देन व्हाट आई कैन डू कि मैं आइट्रेट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ओके 1 पे मैं नहीं करूंगा. देन व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी फॉर अ नंबर टू बी प्राइम कि इसका कोई भी ऐसा डिवाइजर नहीं होना चाहिए इन द रेंज from 2 to n minus 1 or whatever that if the number is x so 2 से x minus 1 तक कोई डिवाइजर नहीं होना चाहिए. लाइक इसका इनवर्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेट्स से वी हैव अ नंबर 2 सो 2 इज प्राइम. ओके ये मुझे इंफॉर्मेशन पता है तो इनिशियली मैं 2 पे जाऊंगा 2 को मार्क कर लूंगा दैट यस इट इज प्राइम. बट इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे लाइक 4 6 8 एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 वो फॉर श्योर दे आर नॉट प्राइम because for all the multiples of 2
they have a factor 2 which is neither 1 nor the number itself. तो जब मैं 2 पे जाऊंगा आई वुड फर्स्ट मार्क दैट यस 2 इज अ प्राइम नंबर, बट इसके जितने भी मल्टीपल्स है दे आर नॉट प्राइम। तो मैं इसके 2 के सारे मल्टीपल्स में जाऊंगा एंड आई वुड मार्क देम एज नॉट प्राइम। ओके सॉरी, इनिशियली मैं इस एल्गोरिदम में सबको 1 मार्क करके रखता हूँ दैट ऑल आर प्राइम। ओके सॉरी, 1 को मैं 0 मार्क कर, इस दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो इसे छोड़ दो। ऑल द रिमेनिंग नंबर्स को मैं इनिशियली प्राइम मार्क करके रखूंगा, ठीक। देन मैं 2 पे जाऊंगा, 2 पे जाके मैं बोलूंगा यस 2 इज प्राइम, ओके, बट इसके जितने भी मल्टीपल्स है दे आर नॉट प्राइम। तो आई गो टू ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मार्क देम एज नॉट प्राइम। ओके, देन मैं नेक्स्ट आइटरेट करूंगा 3 में। देन मैं क्या बोलूंगा कि 3 के जितने भी मल्टीपल्स है दे आर नॉट प्राइम। तो 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे आई वुड मार्क दैट 3 इज प्राइम। ओके, सो लेट इट बी प्राइम। ये मेरा कंफर्म हो गया वंस आई आइटरेटेड टू 3, और ये प्राइम ऑलरेडी था तो मुझे कंफर्म हो गया दैट 3 इज प्राइम। बट इसके जितने भी मल्टीपल्स थे दे आर नॉट प्राइम, ये भी मुझे पता चल गया। सो मैं 6 पे गया, 9 पे गया एंड जो भी 3 के मल्टीपल्स पे गया, if they were marked as prime then मुझे not prime mark करूंगा। 6 was already marked not prime using 2, so it would remain not prime, but 9 जो था वो initially that one marked as prime, तो उसे मैं not prime convert कर दूंगा। जो भी 12 था उसे भी मैं not prime convert कर दूंगा। देन मैं नेक्स्ट 4 पे जाऊंगा एंड मैं देखूंगा 4 इज, जब मैं 4 पे पहुंचा इट इज ऑलरेडी मार्क्ड नॉट प्राइम। तो जब कोई नंबर नॉट प्राइम मार्क्ड हो देन उसके मल्टीपल्स पे जाके उसे नॉट प्राइम मार्क करने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज जो भी 4 के मल्टीपल्स होंगे वो 2 के भी मल्टीपल होंगे तो वो ऑलरेडी मार्क्ड होंगे। सो जब मैं किसी नंबर पे जाऊं विच इज ऑलरेडी मार्क्ड नॉट प्राइम, सो आई लीव इट कि हाँ ये प्राइम नहीं है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सो बेसिकली आई हैव टू ओनली आइटरेट थ्रू ऑल द प्राइम नंबर्स एंड उसके मल्टीपल्स को नॉट प्राइम मार्क करते जाना। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन द एल्गोरिथम। सो अगर ये ऑलरेडी मार्क था नॉट प्राइम, सो 2 के थ्रू मेरा सारे 4 के मल्टीपल्स भी कवर हो चुके थे, इसलिए आई डोंट नीड टू कवर अगेन। सो अब मैं 5 पे गया और 5 को देखा, यस इट इज प्राइम, सो ओके मेरा अब कंफर्म हो गया 5 इज प्राइम, बट 5 के सारे मल्टीपल्स आर नॉट प्राइम। सो मैं 5 के मल्टीपल्स पे गया, जैसे कि मैं 10 पे गया एंड 10 वाज मार्क्ड एज प्राइम, मैं उसे नॉट प्राइम मार्क कर दिया और इसके जितने भी मल्टीपल्स पे जाके मैं, सो दिस वे इफ आई कंटिन्यू 6 पे गया इट वाज नॉट प्राइम, सो मैं आगे बढ़ गया 7 पे गया इट वाज प्राइम, देन 7 के मल्टीपल्स पे जाके उसे नॉट प्राइम मार्क कर दिया। सो दिस वे इफ आई कंटिन्यू डूइंग अप टिल, okay let's say I'm doing this up till n, okay, then मेरा I'm for sure now कि all the numbers from 1 to n are marked whether they are prime or not। okay, but इस एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी देन क्या होगा? इफ यू ट्राई टू थिंक, देन मैं जब किसी भी नंबर 1 पे हूँ, ओके 1 पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं 2 पे हूँ देन मैं 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे अप टिल n? देयर वुड बी n/2 मल्टीपल्स ऑफ 2 जिन पे मैं आइटरेट करूंगा। ओके, जब मैं 3 पे गया देयर वुड बी n/3 मल्टीपल्स ऑफ 3 जिन पे मैं आइटरेट करूंगा। जब मैं 4 पे गया देयर वुड बी n/4 मल्टीपल्स, ओके बट 4 तो प्राइम नहीं है तो मैं इस पे जस्ट एक बार में निकल जाऊंगा, इस पे आइटरेट नहीं करूंगा। हाँ इसके मल्टीपल्स पे, तो लाइक 4 पे यू कैन से दैट ओनली वन आइटरेशन। 5 पे अगेन इट वाज प्राइम, सो n/5 मल्टीपल्स ऑफ 5 वुड बी देयर जिस पे मैं आइटरेट करूंगा। ओके सेम वे अप टिल n पे 1 हो जाएगा। सो अगर मैं इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का ट्राई करूं, व्हाट वुड दैट बी? सो अगर मैं 4 पे भी अज्यूम कर लूं, ठीक है, ऑल्दो 1 है बट मैं n/4 भी मैं ज्यादा तो अज्यूम कर सकता हूँ, मैं एक अपर बाउंड निकाल रहा हूँ तो स्टिल द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n/2 प्लस n/3 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस अप टिल n/n। दिस इज व्हाट माय टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन एट मैक्स। लाइक इससे कम ही आइट्रेशन होगा बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे n/4 नहीं 1 होगा, जो 6 है यहाँ पे n/6 नहीं बल्कि 1 होगा। सो इससे लोअर ही आइट्रेशन होगा, बट अगर मैं स्टिल अपर बाउंड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो ये होगा। एंड व्हाट दिस एक्चुअली इज, अगर तुमने थोड़ा मैथ्स एंड ऑल में पढ़ा हो तो दिस सीक्वेंस
is actually n log base e n. Okay, so n log n का जो expansion होता है is this. So the upper bound for this is n log n. Now ये n log n तो था for if I'm iterating through all the numbers, okay, and then उसके multiples. But do I need to iterate पूरा n तक मुझे iterate करने की जरूरत है? No. तो what do you think? इसको क्या हम मैं और ऑप्टिमाइज थोड़ा कर सकता हूँ एंड वेयर आई कैन ऑप्टिमाइज इट? Okay, we can go to square root n. Okay, let's say my n is 100. ठीक है. Then क्या मैं जो outer loop होगा of going to all the numbers from 1 to n, क्या इसे मैं सिर्फ square root n तक करूँ तो काम हो जाएगा? अगेन अगर n 100 है एंड यू आर सेइंग कि मैं अगर 2 स्क्वायर रूट ऑफ n 10 इतने में ही आइटरेट करके मेरा काम हो जाएगा, देन ओके, फॉर दिस केस यू आर रॉन्ग कि सिर्फ स्क्वायर रूट 10 तक नहीं होगा पाएगा, बिकॉज लेट्स से देयर इज समथिंग लाइक ओके या स्क्वायर रूट 10 तक हो जाएगा. यू ओनली नीड टू आइटरेट टिल स्क्वायर रूट n. यप, तो जो भी नंबर्स होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी ओनली कि अगर मैं 0 to 10 तक आइटरेट करूं, देन उनके मल्टीपल्स में आइटरेट कर करके आई कैन ऑब्वियसली सिर्फ 0 to 10 तक आइटरेट करना वुड बी इनफ टू फाइंड ऑल द प्राइम्स, बिकॉज कोई भी नंबर इससे बड़ा होगा विच इज मार्क्ड एज प्राइम बट इट शुड बी कंपोजिट. यही हो सकता है ना मेरा फॉल्स केस, दैट इनिशियली आई मार्क ऑल ऑफ देम प्राइम, बट अगर इट इज नॉट प्राइम तो कुछ भी नंबर जैसे कि 70 हुआ, so it is like 7 into 10 या 2 into 35, so इसका कोई एक फैक्टर स्क्वायर रूट 70 के नीचे होगा ही. सो स्क्वायर रूट 100 यानी 10 तक मैं आइटरेट कर रहा हूँ, देन टिल 10 कोई एक फैक्टर इसका होगा ही विच वुड मार्क इट एज नॉट प्राइम. सो ओनली आइटरेटिंग टिल स्क्वायर रूट 10 इज इनफ. ओके, दैट इज वन थिंग. ऑल्सो एक और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन आई कैन डू इन दिस. व्हाट कैन बी दैट? ओके, इतना ऑप्टिमाइजेशन के बाद व्हाट वुड बी माय कॉम्प्लेक्सिटी? Here I have n by 2, n by 3, n by 4 up till n by root n. तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? यप, द स्किप थिंग वो हम कर ही रहे. इफ इट इज ऑलरेडी मार्क 0 तो मैं उसके फैक्टर्स पे आइटरेट नहीं कर रहा हूँ. तो दीज n by 4 वगैरह दे आर ऑलरेडी 1. तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कर रहा है. एंड देन मैं सिर्फ स्क्वायर रूट n तक आइटरेट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है. बट स्टिल ये ऑर्डर ऑफ n से ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं n by 2 कर रहा हूँ, n by 3 कर रहा हूँ. सो ऑर्डर ऑफ n से, लाइक इफ somebody is saying कि ये में भी
यू आर थिंकिंग टिल रूट एन ही आइटरेट कर रहा हूँ, तो अगर ये रूट एन लॉग एन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला, दिस n/2 इज स्टिल देयर, और उससे ऊपर ही जाएगा ये। सो ये एक्चुअली दिस कम्स आउट टू बी n इंटू लॉग एन, और इसका भी एक्चुअली जो ये लॉग एन है, वन मोर थिंग, ये जो मैं 2 आइटरेशंस कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके लेट्स से मैं, जैसा कि मैंने देखा था 3 में मैं 3 के मल्टीपल से 6 से स्टार्ट किया, तो 6 एंड 9 पे मैं गया, बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इंटू आई, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम आई इंटू आई। वाई? बिकॉज 3 इंटू 2 से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 3 इंटू स्मॉलर नंबर्स ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, तो 3 इंटू 3 से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आई शुड, लाइक मेरा जो इनर लूप है, दैट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम 2i अप टिल n बाई वट एवर आई, अप टिल n। इन जनरल मैं 2i से स्टार्ट करूंगा एंड गो अप टिल n, बट आई कैन स्टार्ट विथ i इंटू आई एंड गो अप टिल n। सो ये भी एक फर्दर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। सो दिस वे दी स्मॉलर ऑप्टिमाइजेशन करके जो एक्चुअली का कॉम्प्लेक्सिटी आता है, यहाँ पे log ऑफ n के बजाय log ऑफ रूट n आ जाता है, बेसिकली log ऑफ n आ जाता है। तो एग्जैक्ट प्रूफ तुम्हें, ठीक है, थोड़ा मे बी ट्राई कर सकते हो इसे मैथमेटिकली थोड़ा प्रूफ करने का, बट आफ्टर ऑल दीज ऑप्टिमाइजेशन, जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीव का आता है, दैट इज n इंटू लॉग ऑफ, सॉरी, log ऑफ n हो जाता है। सो even for something like, let's say n is given 10 to the power 7, so for n 10 to the power 7, this n log of n would be approx 10 to the power 8. So even for n 10 to the power 7, I can pre-compute it, because 10 to the power 8 operations I can do in 1 second. So even for a range up till 10 to the power 7, अगर मैं further optimizations add कर दूं, so with this complexity I can do. But अगर normally n log n का complexity होता, तो n log n का complexity for 10 to the power 7, n log n would go around 10 to the power 9. तो ये फेल हो जाता। 10 to the power 6 के लिए that was okay, but 10 to the power 7 के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। So I have to do those further optimization to make the complexity n log of n. Okay, so after doing all the optimization, this is the code. I start with I is equal to 2 and go up till square root of n. So I into I less than equal to n. With this condition, I am not iterating till n, but only till square root of n. Okay. And I would check if is prime I. Okay. If I is not prime, if it is already marked not prime, initially I would mark all of them as prime. Okay. I would mark all of them as 1. And 0 and 1, those I would mark as false. So I start with 2. If this is not already prime, I just skip to the next iteration. But if this is prime, then only I iterate from I square up till n with steps of I. Okay. All the multiples of I starting from I square. I could have written 2 into I should have started with 2 into I, but जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर 3 के लिए मैं 2 into 3 6 से स्टार्ट करूं तो इसका सेंस नहीं बनता, बिकॉज 6 ऑलरेडी 2 में कवर हो चुका होगा। सो आई शुड स्टार्ट विथ आई स्क्वायर, ओके, टू अवॉइड रिपीटेड कंप्यूटेशंस। सो अगर मैं आई स्क्वायर से स्टार्ट करके एन तक जाऊं, एंड देन आई कैन मार्क इज प्राइम जे एज फॉल्स। सो दिस ओवरऑल would give a complexity of order of n into log of n. So even this is safe for n less than equal to 1 is 7, ठीक है। for n less than equal to 1 is 7 के लिए भी this is okay. Okay, so I think now it would be clear how I can solve this particular problem. तो इस particular problem के लिए, like जो 1 is 6 का range दिया है, for n equal to 1 is 6 I can run a sieve. तो n equal to 1 is 6 के लिए मैं ये sieve लगा दूं, and after that I can just, for every query I can just answer if is prime is true, then answer a yes, otherwise a no. Okay, so I hope this problem is clear to you. इसमें कुछ डाउट्स है किसी को? अगर क्लियर है तो यस लिख दो।
ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड नमन वुड कंटिन्यू फर्दर। प्रॉब्लम का लिंक डॉक में पेस्टेड है, तो एक बार ओपन करके सबको ट्राई करना प्रॉब्लम को एंड राइट एंड अप्रोच इफ यू फील। Has everybody read the question? If you understand what the question says, comment one. Okay, so for those of you who couldn't understand the problem, let me first read and explain once. So we know that prime numbers are positive numbers that have exactly two distinct positive divisors. Similarly, we will call a positive integer t prime if t has exactly three distinct positive divisors. You are given an array of n positive integers. For each of them, determine whether it is t prime or not. And the constraints are that n is 10 raised to the power 5. So there will be 10 raised to the power 5 integers given, and each integer will be in the range from 1 to 10 raised to the power 12. And we have to write yes if it is a t prime and no if it is not a t prime. Okay. So now everybody must have understood what the question says. Okay. So first understand, it is given t prime has exactly three distinct positive divisors. So any number, say like any number has three divisors. So it must be two of the divisors are 1 and the number itself. So for any number, say n, there will be three divisors like 1, some number in between x, and a third number n. Now we know that every divisor come in pair. Like for if x is a divisor, then n by x is also a divisor. Okay. So
Now, since we don't have any fourth divisor here, that means n by x is also equal to x. Now, if so, hence n is a square number. Now, if x would have been a composite number, then there must have been factors of x as well, and they would also be factors of n. So, x must be a prime number, and hence n must be the square of a prime number. Okay? Yes, so two of you have answered yes, that it should, if number is not a perfect square, then answer is no. If it's a perfect square, then need to check it. Yes. So how will we check it? So if for every integer we first find the square root and then check, then it will give TLE, as there are 10 raised to power 5 numbers. So here also we will use sieve. How? Let me paste the code. See. So first I have pasted the code in the doc, you can see. So first we are, since the constraints of x is 10 raised to power 12, so the constraints of square root of x will be 10 raised to power 6. So I've created a prime array of size 10 raised to power 6 plus 1, and here first I am marking the prime as 1. So marking all integers as prime, and this is the code of C. Also here one thing is missing, that marking the prime of 1 as 0. Now this is the code for C. And after pre-computing the prime numbers, we are making a map and storing the squares of all the prime numbers. We are iterating over the is prime array, and if it is marked as prime, then we are calculating its square, and in the map we are marking it as 1. Now if we take the input, the array, and for every array we check if in the map it is marked, then see out yes, else no. So is there any doubt? If you got understood it, just write 1. Okay, so now Abhinav sir will continue with the next topic.
लाइक ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, सो मेनली इस प्रॉब्लम में भी वही था कि लाइक एक और प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने बताया था कि यू हैव उस नंबर में एग्जैक्टली 3 प्राइम्स होने चाहिए, सो ऑड नंबर ऑफ प्राइम्स ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स में ही होंगे। ये अभी ऑल फैक्टर्स डिस्कस करते टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। सो एक तो वहीं से लाइक तुम्हें आ जाना चाहिए कि 3 फैक्टर्स देन इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ओनली 3 फैक्टर है तो इट्स ऑब्वियसली दैट शुड बी वन, एंड ये दो तो होते ही है, एंड वन ऑफ देम शुड बी अ prime number. So it should be a square of prime number. So I think ये problem तो clear हो गया होगा. Okay, let's discuss one more thing. Okay, अभी जैसे ये जो same question था, where in every query you had to find whether the x is prime or not. इसे मैं change कर दे रहा हूँ to find the smallest prime factor of x. Okay. You know prime factor क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टर इज ऑल द फैक्टर्स आर फैक्टर, बट व्हेन आई से प्राइम फैक्टर, सो अमंग द फैक्टर्स विच एवर नंबर्स आर प्राइम, दोज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. तो तुम्हें फाइंड करना है दैट फॉर एवरी एक्स विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दैट एक्स. तो लेट सपोज अगर मुझे दिया है एक्स इज इक्वल टू 10, सो और एक्स इक्वल टू 20, सो 20 का जैसे कि मैंने फैक्टर्स लिखा था ऊपर, these were the factors of 20. Among them, which one is the smallest prime factor? So this is not a prime, this is prime, this is prime, this is sorry, this is prime, this is prime, and these two are the prime numbers. उसमें से smaller one is 2, so 2 is the smallest prime factor. So इसे like SPF बोल सकते हैं, smallest prime factor. So how do you compute this thing? कि for a x you have to compute the smallest prime factor. So for 20, 2. ओके, किसी को कोई आइडिया? ओके, तो इट्स एक्चुअली द एग्जैक्टली सेम एल्गोरिदम एज सीव. अभी मैंने जैसा बताया था, सीव में मैं क्या कर रहा था, इनिशियली मैंने सारे नंबर्स को 1 मार्क कर लिया दैट दे आर प्राइम, एंड देन अगर मैं 2 पे गया देन उसके मल्टीपल्स पे जाके उन्हें 0 मार्क किया, दे आर नॉट प्राइम. सो अगर मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है तो किसी भी नंबर का, लेट्स से 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या था? इट वाज 2. 9 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? इट वुड बी 3. एंड 10 का स्मॉलेस्ट फैक्टर, इट वुड बी 5. तो इफ यू सी कि अगर मेरे सीव एल्गोरिदम में इंस्टेड ऑफ मार्किंग देम 0, अगर मैं उसे मार्क करते जाऊं बाय द नंबर थ्रू विच इट बिकेम 0, अगर मैं 4, 0 कैसे बना? 2 के कारण बना, तो यहाँ 0 के बजाय इसे मैं 2 मार्क कर दूं. देन 6, 0 कैसे बना? 2 के कारण बना, सो इसे भी 2 मार्क कर दो. 8 भी 2 के कारण बना, इसे भी 2 मार्क कर दो. सो गो टू ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मार्क देम 2. ओके, एंड देन अगर मैं 3 पे जाऊं, इफ आई एम स्टार्टिंग विथ 3 स्क्वायर, 9 से स्टार्ट करूं, तो मैं 6 से स्टार्ट नहीं किया. सो अगर मैं 9 से स्टार्ट किया, सो मैं 9 पे जाके इसे 3 मार्क कर दूं. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, ये जिस भी नंबर के कारण इन द सीव एल्गोरिदम, या जिस भी नंबर के कारण कंपोजिट बन रहा है, that number is actually its smallest prime factor. So instead of just initially what you can do is, and what about the prime numbers?
जो 2 है, 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? फॉर एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स आर 1 एंड p. So 1 is obviously not prime, p is the prime number. So for any prime number, SPF of a prime number would be the number itself. So SPF of any prime number p would be p only. So what I can do, सीव को ही आई कैन चेंज इनटू एसपीएफ. बस इतना चेंज करना है. इनिशियली जो मैंने सबको 1 मार्क किया था, इंस्टेड ऑफ दैट इनिशियली सबको इटसेल्फ मार्क कर लो. 2 को 2 मार्क कर लो, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6. So assuming that all of them are prime. So if they are prime, their SPF would be equal to the number itself. And then 2 के मल्टीपल्स में जाओ, हर एक प्राइम के मल्टीपल्स में, मार्केट 2, मार्केट 2. 3 के मल्टीपल्स में जाओ, स्टार्टिंग विथ स्क्वायर ऑफ 3, मार्केट 3, 3, 3. दिस वे अगर तुम मार्क करते चलोगे, then basically you would get SPF for each number in the same algorithm. तो इसका कोड would be exactly the same like sieve, जो अभी sieve का कोड था. So इसमें मुझे क्या चेंज करना है? इफ आई एम राइट ट्राइंग टू फाइंड द एसपीएफ फॉर इंटेंट, सो इस प्राइम के जगह मैं लिख सकता हूँ एसपीएफ, एंड फॉर एवरी नंबर एसपीएफ ऑफ आई वुड बी आई itself, and SPF of 0 and 1 they doesn't matter. Okay, तुम्हें 0 और 1 का कभी they don't have any prime factor, so ये कभी फाइंड करने दिया नहीं जाएगा. So it's illogical, you can leave it. Okay, and then from 2 run the same sieve algorithm as it is. Is prime के बजाय what would you check? If SPF of I is equal to I. So this way you can check whether a number is prime if its SPF is equal to itself. And then this J loop would remain the same, just that यहाँ पे तुम change कर दोगे SPF of J would be I. Okay. Or just to be safe, you can write min of whatever was its previous SPF, comma I. Okay, although like तुम directly I भी लिखोगे, it would work because I ही जो minimum तुम्हारा smallest prime factor होगा वही तुम्हें देगा. that would only be the SPF, वही तुम्हारा change करेगा उस number को to from prime to composite. Okay, so function का नाम SPF calculate करें. ठीक है, those were okay. So I hope this is fine. इतना change बस तुम्हें करना है and it would become the code for SPF. Time complexity remains the same. So ठीक है, this algorithm is clear. Okay, अब एक last चीज discuss कर लेते हैं, that is about prime factorization. Okay, first of all, what is prime factorization? Like तुमने maths में normally पढ़ा ही होगा. How do we do prime factorization and what actually prime factorization is? So what is, let's say I have something like 20 को ही ले लेता हूँ. What's the prime factorization of 20? Okay, आंसर कर सकते हो तुम लोग. आई होप ये तो पता होगा. 2 into 2 into 5. ओके,
So prime factorization is basically breaking that number into its prime numbers, into product of prime numbers. So 20 को actually तुम prime numbers में break करो, so it has 2 to the power 2 and 5 to the power 1. Okay, so there are 2 times 2 and 1 times 5. That's what 20 is. Okay, same way किसी भी number को, like if I want to write something like 30, इसका prime factorization would be 2 into 3 into 5. Okay, so all raised to the power of 1. Okay, अब let's suppose तुम्हें एक simple question है कि given n, find prime factorization of n. Okay, so you have to return the answer in like this form. Like 20 के लिए you can return that for 2, like you can return a map where map of 2 is how many powers of 2 comes in it. So 2 and map of 5 is 1. So like in this form you can return the prime factorization. Okay, that 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 1, rest all the prime numbers raised to the power of 0, you can say. So this is what prime factorization is. Okay, so how do you solve this problem? So what would be the most brute force approach for this? Okay, so I'll tell you. So the approach for this would be कि what we can do, जो भी मेरे पास number n है, I'll start with the smallest number, I iterate from 2. Okay, so okay, so brute approach would be iterate from 2 to n. Okay, whenever you get something like, let's say you get a 2, you would check whether 2 is a factor of 20. If 2 is a factor of 20, then you would take out that 2. Okay, so if 2 is a factor of 20, let's say if I is a factor, then you will just say in your map that yes, I has one, that there is a power of I present in my n. So I'll increase the power of I as +1. Okay, so I'll say that I to the power of I is increased, and what I can do along with that, I can change n to n divided by I. ओके, सो ये करने से क्या होगा कि अगर मेरे पास 20 है तो 20 में से मैंने एक 2 निकाल लिया, तो आई वुड बी लेफ्ट विथ 20 से मैंने 2 निकाल लिया, सो आई वुड बी लेफ्ट विथ 20/2, 10. ओके, एंड देन अब जो 10 बचा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है. अगेन मैं 2 को वापस चेक करूंगा क्या 10 में भी 2 प्रेजेंट है. 10 में भी 2 प्रेजेंट था, सो मैं 10 से भी एक 2 निकाल लूंगा, आई विल मेक इट 5. ओके, देन मैं चेक करूंगा क्या 5 में 2 प्रेजेंट है, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5. तो मैं आगे बढ़ूंगा, आई वुड चेक फॉर 3. 3 is again not a factor of 5. I would check for 4. 4 is not a factor. I would check for 5. 5 is a factor, so 5 में से मैं 5 निकाल लूंगा, I'll get 1. So when I get 1, when n becomes 1, that means मैंने सारे factors उसके extract कर लिए हैं, n अब खत्म हो गया. So I'll break out of the loop. So this way what I can do is iterate from 2 to n नहीं होगा, basically iterate from 2 until n becomes 1. Okay, this way you'll iterate, और जब भी if I is divisible by n, then add mpi plus plus and divide n by I. Again ये 2 के multiple factors हो सकते हैं, so instead of writing this a single if condition, I can write this like a while loop कि keep on checking until n is divisible by I, keep on dividing it and adding to your factor.
So this way, with this approach, I can find the prime factorization. And what would be the complexity of this? Okay, I'll write the code only. So you will return with this function, you will return a map. So I'll initialize my map empty. So an empty map means for all the numbers it stores 0. So initially my prime factorization is for all the prime numbers raised to the power 0. That's what this empty map represents. Now I'll start with I equal to 2 and I'll run the loop until n is greater than 1. This would be my condition for the loop, and I'll keep on iterating I plus plus, and then I'll just check while n modulo I is equal to 0. I'll do mp of I plus plus and n divided by I. So this way I can return it. So this is basically the code to find the prime factorization of any number n. What would be its time complexity? कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गेस करके बता सकता है इसका? व्हाट डू यू फील क्या होना चाहिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? Square root n. Okay, how would it be square root n? Okay, let's suppose मैं तुम्हें n दिया हूँ. N is equal to, let's suppose 17. Okay, just dry run and check how many iterations would you require. n 17 है तो कितने iterations लग जाएंगे? You would start कि I equal to 2 से start हुआ. Then 2 को check करोगे कि it is not divisible. Okay, you move forward. 3 को check करोगे not divisible, you move forward. 4, 5, 6, 7. 17 is a prime number, तो till 16 it would be not divisible. फिर जब I equal to 17 पे पहुंचोगे, then you would say कि yes, it is divisible. MP of 17 plus plus होगा, and 17 divided by 17 would give you 1. And then through this if condition, you would break out of the loop. So total कितने iterations लग गए इस केस में? 17 iterations लग गए. So actually ये in worst case for prime numbers this would go order of n. So इसका time complexity would be order of n for prime numbers, और अगर prime number नहीं है then whatever, let's say it is 16, then वो 2 पे ही 4 बार डिवाइड होके वो वहीं पे खत्म हो जाएगा. So in best case it may go कि log n टाइम में ही हो जाए. ठीक है, 2 पे ही वो डिवाइड होके खत्म हो जाए, या 16 इंटू 3 48 है तो 2 पे 4 बार डिवाइड हुआ, 3 पे 1 टाइम डिवाइड हुआ. तो इन बेस्ट केस इट में गो लॉग एन, बट इन वर्स्ट केस फॉर प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी भी लग सकता है तुम्हें. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड इज ऑर्डर ऑफ एन. बट क्या मैं इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? दैट्स द क्वेश्चन. जस्ट थिंक, किसी ने स्क्वायर रूट एन कॉम्प्लेक्सिटी बोला, तो एक्चुअली इस एग्जांपल से आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों स्क्वायर रूट एन नहीं होगा कॉम्प्लेक्सिटी प्राइम नंबर के लिए, तो ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है. तो बट क्या मैं इसे स्क्वायर रूट एन में रिड्यूस कर सकता हूँ इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को? जस्ट थिंक अ लिटिल बिट और बताना मुझे.
ओके, एक मैं हिंट देता हूँ, जैसे कि n17 था। वर्स्ट केस मेरा किस लिए जा रहा था, प्राइम नंबर्स के लिए या ऐसे नंबर्स के लिए जिसका लाइक फैक्टर लाइक है। तो इवन फॉर 34 अगर मेरा था, तो टिल 17 पे तक वो जाएगा, 17 पे ही उसे लास्ट फैक्टर मिलेगा। तो ये भी ऑर्डर ऑफ n/2 जैसा हो जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n जैसा में जा रहा है और प्राइम नंबर्स और सम स्मॉलर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स इनके लिए। तो व्हाट आई कैन डू कि मेन मेरा इशू कहाँ कॉज हो रहा था, अगर ये 34 है तो 34 इज एक्चुअली 2 × 17। तो इसका जो 2 वाला फैक्टर है ये तो मुझे स्टार्ट में ही मिल गया, बट ये जो 17 वाला जो बिगर फैक्टर था ये बहुत लेट से मिला। बट इमेजिन करो, अगर तुम स्क्वायर रूट एन के टर्म्स में सोचो, तो इस एन का ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एन होने वाले हैं। अगर मैं सिर्फ स्क्वायर रूट एन तक ही आइटरेट करता तो मेरा क्या मिसिंग होता, ये 17 एक मिसिंग हो जाता। क्या किसी भी नंबर में, इन एनी नंबर, क्या मेरे पास एक से ज्यादा ऐसे प्राइम फैक्टर हो सकते हैं विच इज मोर देन स्क्वायर रूट एन? ओके, माय क्वेश्चन इज, कैन वी हैव मोर देन वन प्राइम फैक्टर greater than sqrtn? Just think an answer. Okay, using sieve। ठीक है, बट जो तुम यूजिंग sieve कर रहे हो, द sieve एल्गोरिदम का प्री कंप्यूटेशन में इट वुड अगेन टेक n log of log n टाइम। अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल इंटीजर n का फाइंड करना है, देन sieve से भी वर्स्ट केस तो मेरा sieve एल्गोरिदम का n log of n है, तो इट्स मोर देन ऑर्डर ऑफ n। ये प्रॉब्लम स्टिल सॉल्व नहीं हो रहा है। व्हाट्स इफ इसमें मैं कॉन्स्ट्रेन अगर मैं दे दूं that n is less than equal to 1e9, तो 1e9 तक तो sieve नहीं लगा पाओगे। ओके, सो यस, तुम्हारा अप्रोच इज नाइस, बट इस वाले इसका हम यूज कब कर सकते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। बट फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम मैंने कॉन्स्टेंट में n लेस देन इक्वल टू 1e9 दिया है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुम्हारा वो अप्रोच भी फेल हो जाएगा, sieve तुम लगा के प्री कंप्यूट कर ही नहीं सकते हो। सो व्हाट वी कैन डू? ओके, लाइक मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये एक बार सोचो, व्हाट्स योर आंसर, यस और नो? नो, नो। ओके, व्हाई? आई थिंक ये क्वाइट क्लियर होगा। लेट्स से कुछ भी मेरे पास 34 अगर है, तो जो भी स्क्वायर, कोई भी n अगर है, इफ आई एम टेलिंग कि ओके मेरे पास है मोर देन वन प्राइम फैक्टर विच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट n। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि n के जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें देन वी वुड गेट n। तो लेट्स से दोस टू, लेट्स से वी हैव टू प्राइम factors greater than n are, let's say x comma y. X comma y are two prime factors greater than x, greater than square root of n. That means there would be some prime factors, something something would be there, then we would have multiplied by x and multiplied by y, because x and y are prime factors, so सारे prime factors का product is n, that's what prime factorization is। तो x into y would be what? मैं बोल रहा हूँ x भी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एन है, y भी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एन है। दैट मीन्स x इंटू वाई वुड बी ग्रेटर देन n, स्क्वायर रूट n इंटू स्क्वायर रूट n ग्रेटर देन n, सो दिस वैल्यू वुड बी actually greater than n, so this is actually not possible।
So we can conclude कि more than one prime factor greater than square root n is not possible. Okay. Okay, so अब once you know this fact, अब मैं क्या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकता हूँ? What can I do now? Okay, so what I can do is अब only square root n तक आइटरेट करो और उतना आइटरेट करने के बाद जो भी तुम्हें फैक्टर्स मिल गए, ओके दोज आर, बट अब जो n बच गया, अगर ये n 1 बचा है देन ओके तुम्हें आंसर मिल चुका है, बट इफ n इज मोर देन 1 देन यू वुड से जो n बचा है दैट इज वन ऑफ द रिमेनिंग प्राइम फैक्टर. तो मैं लूप कंडीशन इंस्टेड ऑफ n ग्रेटर देन 1 i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n लगा दिया. ओके, सो आई एम आइटरेटिंग टिल स्क्वायर रूट n ओनली एट मैक्स. ओके, और साथ में एंड n ग्रेटर देन 1 भी रहने दो. ओके, एनीवेज n अगर 1 बन गया तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वुड नॉट मेक अ डिफरेंस. सो अब मैं इस लूप का ओवरऑल स्क्वायर रूट n टाइम्स ही चलेगा, और ये वाइल लूप अगर मल्टीपल टाइम्स चल रहा है तो मेरा n रिड्यूस हो रहा है, तो यही लूप रिड्यूस हो जाएगा. सो ओवरऑल दिस वुड रन एट मैक्स SQRT n टाइम्स, बट इसमें मेरा कोई एक फैक्टर छूट सकता है. सो लास्ट में मुझे चेक करना होगा इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन MP ऑफ n प्लस प्लस. अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया देन मैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर जो मेरे आंसर में ऐड नहीं हुआ है, सो उसे भी ऐड कर दो आंसर में एंड देन रिटर्न MP. सो दिस वे आई वुड गेट एन ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ SQRTN. Okay, I hope it is clear. ओके, अगर क्लियर है तो एक बार 1 लिख दो. ओके, सो ये एक मेथड है टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट n. ओके, अब सेम वे अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, एंड नाउ माय क्वेश्चन इज गिवन q queries in each query given n, find prime factorization of n, and इसमें my q is up till let's say 1e5 and n is 1e6 only. अगर ये कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास एंड दिस इज द क्वेश्चन, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका किसी ने सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा था कि अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज हैं एंड मेरा n का रेंज ओनली 1e6 तक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्री कंप्यूट SPF अप टिल 1e6. तो मैं स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को प्री कंप्यूट करके रख सकता हूँ टिल 1e6. अब फॉर एवरी क्वेरी इफ आई हैव प्री कंप्यूटेड SPF, ओके, सो इफ आई हैव प्री कंप्यूटेड SPF I can find prime factorization in order of log n. अब मैं order of log n में prime factorization find कर सकता हूँ. कैसे? I'll show you. So अभी ये square root n में चल रहा था. अब मुझे ये पता है कि which is the smallest prime factor of any number n. ये मेरे पास already pre computed है. तो अगर जैसे कि मेरे पास n है, so let's say n equal to 20 है, so 20 का smallest prime factor was 2. You know SPF of 20 is 2. So since you know this fact, what you can do is तुम 2 से स्टार्ट करके हर एक नंबर पे आइटरेट मत करो, बट डायरेक्टली divide this 20 by the smallest prime factor. Okay, and add that to your answer. You got 10. Okay, अब तुम 10 का क्या कर सकते हो? 10 का what is the SPF of 10? It is again 2. So divide 10 by 2 and make it 5. Since the SPF of 10 is 2. Okay, now you got 5. 5 का SPF क्या है? 5 का SPF is 5 itself. So directly divide 5 by 5. You don't need to iterate to
3 4 एंड देन गो टू 5। तो तुम्हें 3 और 4 में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5 पे जाओ और डिवाइड कर दो। सो यू गेट 1 सिंस यू नो SPF ऑफ 5 इज 5। तो इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय इट्स HCF SPF स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, तो तुम्हें उसका एक एक प्राइम फैक्टर मिलते जाएगा एंड यू विल रीच 1। एंड एट मैक्स अ नंबर कैन हैव हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स। सो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आइटरेटिंग थ्रू। मेरा फॉर लूप का कंडीशन चेंज हो जाएगा कि while n is greater than 1, जब तक n is greater than 1 what I do is just divide n by its SPF of n. So add to your answer SPF of n, whatever is the SPF of n वो तुम आंसर में ऐड कर दो और n को डिवाइड कर दो by SPF of n. Okay, so this is the complete code. If you have already pre-computed SPF, तुम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हो। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? एट मैक्स ये लूप कितने टाइम्स रन करेगा? log n। ओके, क्यों log n होगा? बिकॉज जितने भी प्राइम फैक्टर्स है n में, दैट मेनी टाइम्स लूप रन करेगा। हर एक आइट्रेशन में मैं n को एक बार रिड्यूस कर रहा हूँ बाइट्स SPF। तो अगर n 20 था तो एक बार 20 से डिवाइडेड बाई 2 होगा 10 बनेगा, देन डिवाइडेड बाई 2 होगा 5 बनेगा, डिवाइडेड बाई 5 होगा 1 बनेगा। सो 4 टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा। सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। एंड किसी नंबर के एट मैक्स कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? एट मैक्स अगर 2 2 2 हो तो log बेस 2n हो जाएगा। देन 2 3 4 5 हो तो जो भी है सम प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स ही होगा, तो एट मैक्स इट वुड बी log n। वर्स्ट केस इज log बेस 2n, बेटर केस इज log बेस 3n बेस 4n। जो भी, अगर 3 का कोई पावर है तो log बेस 3n हो गया, 2 का पावर है तो log बेस 2n हो गया। सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज order of log n. Okay, base would be 2, I can say, in worst case. So this would be the time complexity. So this would be the time complexity for each query in this problem. Okay, so pre-compute SPF in n log of n. Then for each query, answer each query in log of n time. Okay, so 105 into log n would be well okay. So I guess ये भी क्लियर हो गया होगा। समझ आ गया सबको तो एक बार 1 लिख दो। और अभी तक सेशन में कुछ भी डाउट एंड ऑल हो तो बता दो एक बार। आई थिंक अब कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक दो फैक्ट्स है वो मैं डाल दे रहा हूँ इन द डॉक। जस्ट रीड दोज फैक्ट एंड थिंक अबाउट इट व्हाई दैट फैक्ट इज ट्रू। एंड नहीं भी सोच पा रहे हो नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। ओके, सो ये दो फैक्ट्स है गोल्डबैट कंजेक्चर विच सेज दैट कोई भी इवन इंटीजर है which is greater than 2, it can be represented as sum of two primes। जैसे कि 4 can be represented as 2 plus 2, 16 can be represented as 5 plus 11। so अगर कोई भी इवन इंटीजर है you can always represent that integer as sum of two primes। this is a fact which you should know, maybe कहीं किसी प्रॉब्लम में काम आ जाएगा। और एक और फैक्ट है that you should know कि कोई भी दो, अगर तुम एनालाइज करोगे जो नंबर्स को, देन बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इवन इफ यू गो अप टिल 10 टू द पावर 9, कोई भी दो प्राइम नंबर्स के बीच गैप वुड बी एट मैक्स 300। सो द गैप बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। और इफ इन केस किसी ने कल का, आई थिंक कल था संडे, जो कॉन्टेस्ट था वो दिया हुआ, तो उसका जो डी प्रॉब्लम था दैट वाज स्लाइटली बेस्ड ऑन दिस फैक्ट।
मे बी यू मे ट्राई दैट। ठीक है, तो कोई भी अब डाउट हो सेशन में रिगार्डिंग द सेशन, देन यू मे आस्क, और इफ नॉट देन वी वुड कंक्लूड द सेशन। कैसा लगा थोड़ा एक बार बता दो, क्या समझ आया सब कुछ? और एक दो फैक्ट्स है जिसमें मैं कुछ फैक्ट्स एंड, जैसा कि मैं बोला था स्टार्ट में, एक दो एल्गोरिदम्स के, इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट द प्रूफ्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें इस डॉक में पेश कर दिया जाएगा इन सम टाइम। ठीक है, इस डॉक को अपडेट कर दिया जाएगा, इन सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एंड ऑल पेश कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट देर आर फ्यू होमवर्क प्रॉब्लम्स जो मैं अभी पेश कर दे रहा हूँ। यू मस्ट ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर अभी सेशन समझ में आया तो ये सब थ्योरी पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा इफ यू डोंट सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, सीपी में अगर तुम्हें ग्रो करना है, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो अभी कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स है, इसमें फ्यू मोर ऐड हो जाएंगे एंड फ्यू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी इसी डॉक में ऐड हो जाएंगे, जो जिसको तुम गो थ्रू कर सकते हो इफ यू नीड टू लर्न मोर। तो डू गो थ्रू दैट। एंड हाउ वाज द सेशन? Any feedbacks if you need to give, if you wish to give? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, थोड़ा बातें भी कर सकते हो। चलो तो ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ बोलना हो पूछना हो तो रुक के पूछ सकते हो, वरना आई गेस यू मे लीव। और कुछ बोलना कुछ है? गेस सो। అది ఎక్స్ట్రా దాని బదులు పడేసే బదులు అన్న ఇట్లేను ఇదంతా ఏం బాగాలేదు కదరా ఇది ఎలా తిన్నావురా ठीक है गाइस, गुड बाय।